just laughing that they're joking around with this. And it's an international game. They're having it as easy as they want. There's nothing for them. It's so easy. They're just easily going in. Everyone's scoring 100. It's like 100 giveaway, you know. Shaheen might be the only bowler who actually looked to be threatening. Misbah, I have no idea. If you make him chief selector coach and batting coach, what else? You're gonna just make him bowling coach, just make him the head of PCB, make him the head of everything, you know? I don't know how he became coach. Well, what coaching experience does he have? I have more coaching experience than he has. I don't know how did his name come in? We're Pakistan, the national cricket team. You know, we need an elite coach. Mickey Arthur was an elite coach. Misbah, I've never seen him coach anywhere. I mean, he could have the coaching badges, but you need experience. You don't just get your badge and be like, I'm gonna go coach Pakistan. That's not how it works, you know. There was many better options than him. Even if we had to let go of Mickey Arthur, which I don't think was the right decision, there was better options. From the top to the bottom, everything is shambolic right now. Misbah Haq, definitely he has no idea what he's doing. Waqar Younis as bowling coach has no idea what he's doing. You need to make a game plan. I don't know why in the second day you're trying something you should have tried with the new ball on the first day. Yeah. Going around the wicket to David Warner, wide action. I think first of all, the playing 11 suspect already. Then everything with the bowling plan to the batting plan, it's just not working out for Pakistan, and you can see that we're struggling very, very badly. No, I think it's just absolutely everyone is just lost at the moment. There's the cricketers. I feel very bad for Mohammad Musa. He's inexperienced. He just played one PSL, and now all this hype. The entire idea, we're going to come to Australia, beat the great Australia. This might not be the greatest Australian team, but as long as you got Steve Smith and you're letting David Warner score, Marnus Labuschagne score, you're not even threatening their lower order at all. It's not even a test. Their bowlers are sitting up almost 2 days. They're sitting up with their legs up. You know, they're relaxing. They come in. Our players have been in the field for almost a day and a half, a day and 3/4. And then you expect the openers to score. Obviously, Azhar Ali as captaincy, I think he looks lost in the field. He doesn't know one boundary happens. He's not proactive. He's reactive. Yeah. A ball will go through the gully. He'll put in a gully then. But if the ball's already gone, what's the point then? Yeah. What's the point then? They'll hit one shot through the covers. He'll put a deep cover. You don't do that. It's a test match. It's not an ODI where you try to defend. You're attacking to get wickets. With a new ball, you need to attack to get wickets. Why do you have 2 covers in? Just leave 1 cover in. Get 3 slips of gully. We saw yesterday a few chances go through the gully. But you know what? We only had 1 gully and 3 slips. Add in that gully. The ball was moving around the first day. It was swinging. It was nice swing for Shaheen Shah, especially away from the angle was coming catchers in the positions. I think the captaincy has been poor as well. I think he's a very defensive-minded coach. Misbah is a very defensive-minded defensive-minded coach, and Azhar Ali is a defensive-minded captain. Like, we are scared to make decisions. We're waiting for them to do something, and for us, maybe some luck, and then we get the wickets. That's not how it works. It's international cricket. Defensive captaincy, defensive coaching, defensive play is not going to win you games. We saw David Warner. He did start off slow. Both David Warner and Marnus Labuschagne, they started yesterday, the first 10-15 overs, they're playing out the new ball. But as soon as they settle in, they're smashing all our bowlers. Yasir Shah, almost 6 runs and over. Iftikhar Ahmed was getting smacked all over the park. Everyone was really getting the hammering. And David Warner played for fun, really. It was like we were some college bowlers and playing in international scene, and they were just smacking us around for fun. Absolute joke. Yeah, it was nothing. There was no sort of game plan for Pakistan, you know. As someone, I feel like I'm reiterating myself, but that's what it is. That's what the cricket of Pakistan has now come to. It's a fallen state from where they were, you could say, with Misbah 3 years ago. That was a great team, though. You had bowlers, you had a plan with a coach. There was a plan that you can tell they're planning for this. If this is not working, okay, we have a good backup plan. There was nothing out there, you know, where the coaching staff, the captain, it just has to go down to them. Ehsan Mani, Wasim Khan, the MD, he's coming in, he's just ruining the cricket. Pakistan has not had anything good to cheer about. And cricket-wise, at least, they've had nothing. We won 2 ODIs against Sri Lanka on their C team, and we're good and stuff. We lost to their in T20s. We got hammered. You know why? We brought in players like Umar Akmal, Ahmed Shahzad, consistently failing, as you said last time, consistently failing. But you know what? They're consistent. So Pakistan's going to play them because they're consistent. Doesn't matter if they're doing well. They're just failing. Yeah. But they're consistent, you know? That's the motto for Pakistan, it seems like.
And that's how it's been from then. Australia, 3 T20s. First one got rained out. I don't know why you bring back a 30 plus, 35 plus year old guy. Oh, You know, they're fine. Misbah Haq, I'm sorry, but there's a saying. You stay long enough to be here, or you see yourself become the villain. And now I'm sorry, you're becoming the villain. He was a great captain. I think he was with a team that was able to win games. As a batsman, I think I respect him a lot. As a captain, people say he was still defensive, but he was a good captain. He had a good team. He did well with our team. He took us to number one in the world in Test match cricket. But as a coach, you've done nothing to show us that you have any potential. We have the T20 World Cup coming up next year, and you've already ruined the T20 team. The structure that the whole team that we had created for the past couple of years, that Sarfaraz Ahmed and Mickey Arthur worked towards for the 2020 World Cup, he's come and ruined everything. The likes of Sarfaraz Ahmed is out of the team, Mohammad Hafiz and Shoaib Malik out of the team. I mean, it's shambolic. And then going back to the test team right now, Misbah Al-Haq, he's selected the team out of nowhere. Iftikhar Ahmed, he's a good T20 player. Why are you playing him in tests? You can see by his technique, the way he got out today, a wide short ball trying to cut it. You have to just play easy. You don't have to play everything in the first 25 balls. He's trying to smash everything. I mean, he's not a test match player. Everyone can see that. I don't know how he's still playing. He got smacked around. And one of the reasons Misbah said he got picked over someone like Fawad Alam, who's consistently scoring, is because he can bowl some off-spin. He got smacked around. Every time he comes into the attack, David Warner and Marnus Labuschagne, their eyes lit up. They're trying to playing all over the sweeps, on the ground six. Iftikhar is definitely not good enough to be in the team. I think I can say about that a few other players in the team as well, in the side who can't really be in the team. And then back to the fact where Mohammad Musa, obviously young talent, I feel bad for him because you can't just bring young players and expect them to win games. You need to groom them, you need to teach them, you need to give them plans and all. It looked like there was no plan for Mohammad Musa. He's coming around the wicket short, then over the wicket full, short, full. Like you feel for him a bit. One ball good and over, there's nothing, and especially Waqar Younis, this is the third or fourth stint he's had. Fourth or fifth, probably. Yeah, and you can tell he's consistent. What is he doing? He's consistently failing. He's failed 3-4 times. You know what? We'll give him another chance. He'll fail again. As a bowling coach, at least control your bowlers' front foot lines, man. So many no balls. So many no balls. Last game, okay, we thought maybe this game you'd control them. You know what? Same thing. You're putting a kid under pressure. He's just played cricket for a year almost, hardball cricket at the highest level for a year, Mohammad Musa, and you bring him to the test team and you tell him you're going to win us the game. You say the same thing with Naseem Shah. You overplay him, you injure him. A guy who's just come back from a back injury, a stress fracture. At 16 already, that's already very, very. It happened to him. He shut down his red ball cricket because he needed to prolong his career. I don't know if this is the same way they have to go with Naseem Shah. He's a great player, no doubt it. But we have to manage the load. We saw what Mohammad Amir. He decided he's not going to play red ball cricket. That was a different story. Mohammad Amir just doesn't want to play for Pakistan. He gets 5 years out of the game, yes, and everything. He comes back. Pakistan treat him, give him the chance. And now after a few years, I think he's just going to be chasing something else rather than playing for his national colors, which is a disgrace. Playing for your national team is, I think, the biggest honor someone can have. So representing your country is the biggest honor that I would have. Even I think you would have. Yeah. Representing your country, there's no bigger honor than that. And I just don't think the players that are on the field yesterday, these past players that have just decided to retire just because, I just want to prolong my career and stuff. I just can't play. Mohammad Rama's bowling really well in the last test series. I think he should have continued, or at least played to this series. In Australia, or maybe find a balance. Like, I'm not going to play home tests because there's not much for me to play in our conditions. But when we go away, Mohammad Amir could have been a deadly bowler right now with Shaheen and Mohammad Abbas. Yeah. Shaheen has shown he can swing it both ways. Mohammad Abbas, I mean, he didn't pick up wickets, but he was consistent. He was not giving away 6-7 runs and over. He had 4 to 5 good balls and over. Sometimes all 6 were very good balls. But when you let batsmen settle in from one end, the other end can't do too much. We always talk about batting partnerships. There's also something called bowler partnerships. We need 2 bowlers to be supporting each other. And we were seeing sometimes when Musa was bowling with Abbas and one over from Musa was going 8-9 runs, and then Abbas 3-4 because they were easy taking singles. And just because Musa's bowling poorly and he has to have 3-4 fielders, 5 fielders out in the deep, doesn't mean you have to keep the same for Mohammad Abbas. And it goes back to the captaincy and the coaching. I just don't think they have any plan. I don't think they're good enough. I think
this team is a long way to go, and hopefully by the next series we make some big changes, new batsmen, maybe new bowlers, or just something different. Because right now this team is definitely not good enough to compete. I think the entire structure from the top to bottom at the moment, it's fragile. There's something going on where Misbah Haq is coach, Waqar Younis is coach. Waqar Younis recently said that he should never be coached again. In his last report after that, you know what? 3 years later, he get the same coach. Misbah Haq, what has he done? Nothing. He's a good player. I don't deny him, but not every good player becomes a good coach. Exactly. And just because he was a good player does not mean he'll be a good coach. And you can see that right now. He's not done anything. Now. He's not moved to cricket. He's brought it down. He's brought it the other way down. Absolutely. He's removed Sarfaraz from captaincy. That's a big decision. No matter if you say it was not his decision, it was other people's. It's a big decision to remove your captain from all 3 formats for the last 3 years almost. Exactly. And post Misbah Sarfaraz, and you don't win without him. Yeah. You're not winning. If you do changes and you're winning, I'll support you. You know, that's fair enough. You made a good decision for the betterment of the team. You're making decisions that are bringing the team down. Umar Rahman and Shahzad, they were one of the reasons we lost that series. Now going to the Australia T20 series, Mohammad Irfan. I don't know how he gets selected. He's one of the reasons we lost that series. Not selecting likes of Hafiz or Shoaib Malik in that T20 series is another reason we lost. We went with so many defensive players in the T20, and when we go to test, it's just so defensive, or there's no balance in between. We're playing Iftikhar, a T20 player in tests, then we're not playing someone like Mohammad Hafiz in T20s who should be playing that format. I don't know. It's shocking. Just the fact that the World Cup is next year is in Australia. It's supposed to be Pakistan's proper. See their players that they have not tested, that are in the picking, like who players Pakistan might select for the World Cup next year in Australia. See if they would select them, you know. Bringing Khushdil Shah, right? He's decent, but is he really part of this? You're bringing Mohammad Irfan. Is he really going to be part of that squad? Honestly, tell me, is Mohammad Irfan, did he even have any reason to go there? No. Instead, you play him 2 games. You know, first game he got hit for 21 in and over, 2 overs. All right, you know, but he's had his chances. This is a comeback. And you saw how bad that comeback went. You had 2 youngsters sitting on the bench. Yeah. And you know what? When you've lost the series, you give it to them. And by then, Australia are playing free-flowing. And they bowled second, and they're only defending 106. Yeah, and you can't score. And I wouldn't be surprised, really, if Misbah drops one of them or both of them. Because that's the decision Misbah makes as chief selector. He can do anything. I mean, I wouldn't be shocked if he took Imam Haq as a T20 player. I don't know how he did that. He might just make him a starter. Yeah, Imam Haq. He might just be Sohail, 2 players. You can't have a T20 batting lineup with Imam Haq and Haris. Yeah, just because your players are playing well in ODIs does not mean you bring them in other formats. Exactly. Imam Haq and Haris are playing very well in ODIs. All right, keep him in the ODI system. I think England has done that really well. They have spread their teams different 50 overs. You see Broad and Anderson only playing tests, not 50 overs or T20s, because that's where they specialize. Then you see players like Tom Curran who are playing T20s because he specializes in that. You see players like that specializing. And players like that, yes, they might not be good enough for other formats. They try in domestic, but that doesn't mean you quit in domestic. You know, I feel very bad here. Shout out has to be given to Fawad Alam, who's one of the best Pakistani first-class player, probably 12,000 first class this week with a double century. Yeah. And he's being ignored for the likes of Iftikhar Ahmed, who every time touches the bat with the ball goes straight to a fielder. And over the last 3 years domestically, Fawad Alam has had the highest average. He still has a lot of runs, but he has the highest average of nearly 58. His overall first class average is 58, and which is just showing that just because you play in domestic doesn't mean you're going to play international Pakistan. Because our system is terrible. The system is the worst it can ever be, and it's just going to get worse. But enough about Pakistan. How about we talk about the New Zealand-England game? You know, New Zealand again putting up 375. Latham, brilliant century. Also, big shout out to the debutant Mitchell. He came in for Colin de Grone, who was injured, and it was a fantastic 73. You can just see towards the situation, the partnership that the middle order had. Him, Santner had a good role as well. I mean, they played good cricket, and they've put England in a position of trouble. 24 for 2, I believe it was, at the end of the day. Them losing Denley as well. And Thompson, and Sibley. Yeah, Denley and Sibley right at the end. Matt Hendry, very good swing. I think he also had Burns nicked off. It was dropped, unfortunately, but Henry he's a fantastic bowler as well. Coming in for Trent Bolt, and
I mean, New Zealand are doing fantastic well. England have all to do in the coming days. Yeah, I think it's going to get very tough for England, especially with Joe Root not in form. He needs Yeah, he needs he to needs pick an up inning. where he was. He needs an inning. He needs 100, a 50, something to get going. You know, Joe Root, the old Joe Root that we saw, he's been diminished in tests recently. But I think for him to be really good, like he should keep playing. He has to work hard. He's now in a better batting position, in my opinion. Yeah, 4 was always his I think it was position. always He I don't tried to know, force himself up at to three. 3, and it just wasn't working. And I think, yeah, you get Denley, but at the end of the day, he's still batting as if he's at 3 because they're losing those wickets so early. So I think you see the best batsmen. Steve Smith batted at 4. You see Virat Kohli batted at 4. Joe Root now going down to 4. My bad, I said Joe Denley. He's a good batsman, but he's not up there yet, or he might be up there. We saw Babar Azam now batting at 4 as well. So I think that's a good long-term plan for the best players. Usually bat at 4 because if you, apart from Kane Williamson, who in my eyes is probably one of the top 2 in the world, because he carries that team, and he bats at 3 because he's not scared or he's not worried about the new ball. I think other teams, they try to keep their best batsman at number 4. So if they lose an early wicket, that he doesn't have to play the brand new ball. And especially with the red ball, it swings a lot more, and it's just dangerous for having one of your players go out there so early and then come out with the duck out a couple of overs later. So talking about 4s, Mitchell Stark also took 4 wickets, 4 for 22. Explicitly, he bowled really, really well with the pink ball, and he gets it to swing, and he gets it really well. But I don't think we've credit Australia here enough. You know, they've done hard. They've done the hard work. They've put up 583 runs. Yes, it might have been the best performance for Pakistan, but still scoring 336 is not a joke. It's not an everyday task. Marnus Labuschagne scoring 100. You know, Joe Burns missing out. Steve Smith only scoring 40. But if you're able to score 580 for 3, you might think it's a flat deck. But you know what? The Australian players, they come out under lights. Josh Hazelwood, Pat Cummins, and Mr. Stark. The trio come out and they absolutely demolished Pakistan last night. There might be some prediction for rain tomorrow and the day after. But even though there might be one day left, I still feel that 14 wickets for Australia is not too hard, especially with the way Pakistan's playing. I think Australia are going to win this one. I think England need a performance from someone in that middle order needs to stand up other than Ben Stokes. Stokes played well last game. Zach Crawley has a debut. It's too much to expect from him. But what can I think the it's debut also out show? of position. He's not really a lower order batsman. Yeah. He likes batting higher up. So it's going to be fun to see how they bat. A lot of eyes on Joe Root, obviously, and Ben Stokes, the 2 most senior players in that team right now, from the bowling unit. I think it's just how they bat, really. They got good batting depth. Chris Wokes is back on the side. Sam Curran, that 8, 9, 10 Archer can have a bat as well. So I mean, it's a team that should be able to bat deep. It's just how do they bat in conditions that swing a lot, and we've seen them struggle a bit before in New Zealand past couple of years. But I think this is the real test. I think that's all from us today, guys, and I hope you guys had a good listen. If you guys have any ideas or any opinions or any comments, please leave it in the comment section below, and please like sports on Instagram at the No Good Sports Show. Thank you for a very good, fun time. I'm Nasser Khan. And I'm Sal Khan. And we're we'll signing see off. you later. Bye-bye. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद लतीफ़, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आपको जैसे पता होगा कि कनाडा में इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है फ्रॉम 14 to 15 सितंबर, और पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें और सपोर्ट कीजिएगा ऑर्गेनाइजर्स को, स्पेशली फर्रुख सिद्दीकी साहब। कराची में भी बड़ी टीम खिलाते थे, ये हमें भी खिलाया है इन्होंने, और टेप बॉल के मास्टर थे, और अब ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और बहुत दूर बैठा हूँ, दिल तो करता है टेप बॉल दोबारा खेलें, आए आपके साथ खेलें, लेकिन अब तो उम्र भी हो गई है। लेकिन आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सपोर्ट दिस इवेंट ऑन 14th of September और 15th। इसको सक्सेसफुल बनाएं और अपनी कम्युनिटी का, और जो भी जितने भी हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, अफगानिस्तानी, जितने भी हैं, लोकल हैं, कैनेडियन हैं, मिलके इस इवेंट को कामयाब बनाएं। और उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आएगा इस टूर्नामेंट में, और इसका फीडबैक लेता रहूंगा फर्रुख से, और सपोर्ट मेरी हमेशा से आपके साथ है।
Thank you. Welcome viewers, we are back here at Sports Talk at Sports Trend with another episode, and today we have some special guests with us, and as you can see we have Zahoor Butt, the president of MCL, Mississauga Cricket League, and also our very own Amna Shah is here. And you know that makes my life very easy because अगर आमना यहाँ पे है तो मुझे होस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो आमना, please take over. जी, thank you so much. आप इतना ढेर सारा प्यार देते हैं, and I'm very happy to be here on the sets of Sport Trends. And today's a very special episode because we will be talking about the MCL Mississauga Cricket League, a gala that's coming up. And हमारे साथ है एक बहुत ही amazing guest, Zahoor Butt. Everybody knows him, and he is the president for this MCL league. So I would like to welcome you. Thank you. And I also like to welcome you. Yeah. So it's great to be working with you, and so let's talk about when this league started. Yeah, so journey started back in 2014. Oh, yeah. So it was a bunch of passionate cricketers. We started together. Let's have a league. There's no league in Mississauga Cricket League. Everybody has to go outside, play there. So there was a good opportunity for us to start a league there, and in 2014 we started it with just 5 teams, and I kid you not, but we were just still debating, should we have a league, should we not have a league, and it is March and April. So you can imagine usually the season starts in May, and we are talking, should we have it, and then said, let's do it. So in April we started, let's have it, and then still within 1 month we got 5 teams. So we started with 5 teams in the T20 at Courtney Park Field, Mavis and 4-1 area, and that's where the journey started with about 70 players in it. So एक तो होता है कि ना you just started, एक होता है you started with a bang, Yes. right? And you started with a bang, and if you just even look at like for last this many years, right? You are the fastest growing league, cricket league in North America, Canada. How's that journey? Yeah, it's amazing. The moment we started, I was a secretary in the beginning. Wow. But the role keep on changing, the responsibility keep on adding on me. And on 2015, people really liked it. They want the way we started in 2014, and we doubled the team to 10 right away. And right away doubled the team. And then, we put more emphasis on the services and the performance and the environment of the game. And people really started loving it. And then the word is spreading around GTA, and people were loving it. And, in 2016, we again doubled the teams to 22. So Wow. it was amazing. We had 22 teams there. But we kept on growing, kept on focusing on that. And when 2017 came, we had 34 teams. And then 2017, what we did is we started a volunteer work as well. Actually, I forgot, in 2015 we even started a junior league. Junior league. Wow. Youth league, yes. So it was hard to convince the existing academies. They were hesitant to participate, but with the support of city of Mississauga, we had 4 teams, and it was really good venture up there. But due to resources and we couldn't continue later on. But we kept on focusing on the adult, because that was a huge demand in adult size. And on 2017 we had, if you remember, Amna, you were supporting our women event. Yes, I remember that. You were there at the Courtney Park. We supported a women venture there, and then in the same year
We sported a night cricket as well. That's right. I was there as well for the interviews. Yes. Sport Trends. So you were there too. Yes, So with the yes. help of you guys, you kept on supporting in the sport and covering all the events in GTA. Gee. So you started you started with how many teams? 5 teams. And now how many teams you had last year? So last year we had 62 teams. 62 teams. Exactly. And Wow. how many is going to be in 2020? In 2020 is Or is amazing. it going to thing. be? Is it a secret? Or is It- it- it is like for our viewers, you can tell us. You don't tell anyone. yeah, no. The thing is, if you remember last year in awards gala, you were asking how many teams we are projecting, and I said, we are about 50 teams, and you see that we surpass our target to 62 teams. Yeah. So that was amazing. No, that's a great achievement. I mean, the fast-growing league, right? So tell us more about the upcoming gala that's coming up the 15th of December. Yeah, on the 15th So- of December, a lot of things are happening. A big dignitaries are coming in to What's celebrate the our secret? Always there is a lot of dignitaries, Right. from the mayor to MNAs, MPPs, councillors, everybody is there. So what's your secret? You getting them? The secret is, we are promoting cricket throughout the community in Mississauga, and they see it. The growth is happening. They see the numbers. I kid you not, we have up till now 3,400 plus members. Wow. Players. Players, Yeah, okay. So it's amazing to see how with the 70 players in 2014, Right. and now we have 3,400 plus. Yeah. And then one That's- thing we always talk about and we always remember as a sports friend is the MCL is the one who engaged us in a gala. Yes. And you guys always do gala very grand level, right? Right. And I think you were the very first one. I maybe for the record, maybe if I'm right or wrong, is we did the live broadcast for the gala 2 years ago. I think that was the first league we did the live because doing live it's you're putting your everything in stake, everything is going live. So I'm commending Zahur for that. It's amazing. One more thing, I think you volunteered in some schools also, right? Absolutely. In 2018, we, with the help of Sports Friend and Rizwan Chima. Rizwan. thanks. Oh, yes, Yeah. Rizwan Chima, right. So we went Boom to boom chima. exactly. That's our hero and pride. We went to a school in Mississauga. It's a Christian girls' school. Private school. Private school, and we gave them a full day session for cricket, how to play cricket, and we're so thankful that Farooq Bhai and Rizwan Bhai volunteered in that event, and that was a huge success. And they called us this year again. Can you please come and, Seriously? and do it? So it was Yeah. amazing thing that once you see it, how passionate you see the girls were, Yeah. and it was nice feeling to see the wanting to play cricket within those girls. And we witnessed that some girls had a lot of talent built in. Oh, they- first time holding Oh, the yeah. bat And they're playing so well. and so well. So They that were was hitting some powerful shots. exactly. So what message do you have for the parents? I mean, I'm sure there are a lot of girls that still want to enroll, and how can they contact you, MCL? Yeah, so that's what we're doing this year with the help of Sports Trend. We are spreading more awareness throughout the different schools as well, all Christian schools and the public schools. What benefits it brings it to the community to be active, just like any other sport. This is amazing sport, interesting, and once you get involved in it, you just want to play. So Yes. that's how it is. That's true. It's all about the passion. So, so what can we expect this year at the gala? What surprise do we have for everybody? Well, we are so fortunate. MCL have been so much fortunate that so many good sponsors have contacted us that they want to support MCL and its goal and objective Vision, yeah. mission. And we are giving back to each and every team this year a lot of prizes, regardless you won or you didn't won any trophies, but there is a reward for you.
So make sure you attend it and be there. Mark your calendars, 15th of December. Yeah. And good food too. And good music. And good music. So Amna, like, where are we going for that award? Because like Amna will be doing a part MC there too. Right, I'll be emceeing this year as well, so that's Awesome. great. That's an amazing news. That MCL, Amna Shah has volunteered to do the MC this year for MCL, which is a huge thing, and it's going to be very exciting that Amna Shah will be hosting it. Thank you so much. No, we really look forward to seeing everybody there, so please mark your calendars, 15th of December. 15, yes. And where is it going to happen? This is happening South Common Community Center in Mississauga. Okay, this is Mississauga Cricket League. Yes, it's Mississauga And, Cricket League. You know, so the Mayor Mississauga, she's a very big supporter of this league. All the councillors, all the previous events I attended for MCL, you know, it's a huge support from the government level, provincial level, federal level, city level, and all the community members. You know, Yes. we have a huge support for MCL. Good luck MCL with their award gala and everything. We would like Zahoor to come back after the gala and we talk about, like, you know, how the event go, because you know, it's a passion. The cricket is a passion, and Zahoor, especially with his the governing body for the Mississauga Cricket League, it's doing it always. He always looking for new things, bringing new things. Like, you know, he engaged us in a gala and a night cricket and school cricket, everywhere. You know, it's a tough job. It's not easy. A lot of people think it's just easy. You know, you put together a league and you're good, but it's a lot of work. So Absolutely. for that, you know, Right. thank you very much Thank for you your so time. much for Thank having you. me. I just want to add one more thing is that MCL is not just a league, it's a full package. Yes. As Farooq Bhai said, we are involved in schools, in communities, volunteering it, and it's just like a family. Yeah, So but one thing I remember, like, yeah. you know, the cross city cricket. You introduced cross city. Oh yeah, that's amazing thing as Yeah, well. Like yeah. we, I want to say sorry on camera. I could not go with the tour at the Ottawa. So we was very upset about that, but you know, we will make it up next time. yeah, you know, sports trend. The reason he's saying that because I feel the sports trend is MCL family, part of MCL family, and wherever we go, sports trend is there. So that's what it is. Yeah, but that was a very good initiative, like, you know, MCL playing with the Ottawa Cricket Valley, and I think it should be more series like that in different cities. Right, different Could be more. cities. Yeah, for sure, absolutely. And this is what back to your question. We are bringing them back in Mississauga from Quebec Federation is coming in, and Ottawa Valley is coming in. Oh, wonderful. So in 2020, there's a lot of new surprises, right? Absolutely. A lot of things that we will be updating with Farooq Siddiqui on Sport Trends. Absolutely. Yep. So you want to do closing? I'm sure. Well, you know, it was wonderful being here on the sets of Sport Trends, and I would like to thank Farooq Siddiqui as well as Zahoor Butt, and we will look forward to seeing you guys on December 15th. All right. See ya. See ya. See you soon. जी व्यूअर्स, हम आज बड़े दिनों बाद दोबारा शामिल हुए हैं यहाँ पे, और हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने अशर जैदी, जो कि दुनिया भर जहान की सैर करते रहते हैं और कनाडा से बड़ी गहरी वस्बती, और दूसरे हमारे साथ अमजद फल्की साहब हैं, बड़ी जो है वो मजेदार बातें करते हैं, बड़ी अच्छी इनकी जो है आज हमें आवाज गायब होगी फरूक भाई की। जी आ जाएगी। बहुत दूर बैठे हैं फरूक भाई, तो थोड़ा फरूक भाई, कैन वी डू इट अगेन? यार फल्की साहब, ये एक दफा ना जरूर करता है कोई भी सॉफ्टवेयर। तो मेरी बैटरी भी दोबारा जल्दी करे, मेरी बैटरी भी कम है, 18% रहेगी। अच्छा। सर आप पूरे नॉर्थ अमेरिका में जा रहे हैं इस वक्त? जी
जी जी। फरूक भाई, वेलकम बैक। जी बिल्कुल, वेलकम है जी अशर भाई। मैं हमें थोड़ा सा ये हम आज अपनी जगह चेंज की स्टूडियो की, तो जी जी लेकिन चले राइट ऑन टू गर्मा गर्म मैच चल रहा है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। तो गर्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ ठंडा ही है बिल्कुल। बिल्कुल जी, आपने सही कहा। अच्छा, सबसे पहले तो कनाडा में जितने दोस्त और अमेरिका में जितने दोस्त देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और आप लोगों की बड़ी याद आ रही है। और एक बात का इत्मीनान है कि आप लोग इस वक्त अपने घरों के सामने से बर्फ साफ कर रहे होंगे और मोटी मोटी जैकेटें और पता नहीं क्या क्या पहन रहे होंगे। मैं ये टी शर्ट सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि ये पहन के मैं बाहर भी निकल सकता हूँ, तो मेरे पास ये आजादी है, तो उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और जो सर ग्राउंड में हो रहा है उसकी तो आप बात ही ना करें। मेरे ख्याल में गुफ्तगू करते करते मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो ब्रॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस टोटल टोटल डिसअपॉइंटमेंट। लड़कों पे आप जितनी भी बात कह रहे हैं, लड़के सिस्टम का प्रोडक्ट होते हैं, हमने पहले से कहा है। सिस्टम बनाने वाले वो लोग हैं जो इस पर टीम चला रहे हैं, जो कि एक साहब ने बहुत सारी पोजीशंस ले ली हैं। वो चीफ कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, अन्नदाता भी हैं, दादा भी हैं, नानी भी हैं, पुप्पा भी है, सब कुछ है। वो डिसीजन ले रहे हैं और सबके सामने है। उनके साथ वकार भाई बैठे हुए। मेरे ख्याल में जो एक दो क्रिकेटर से बात हो रही थी वो ये था कि कौम को एक लॉलीपॉप दी जा रही है कि जी हमारे पास यंग लड़के हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, कि बच्चे चेंज होते रहे, लेकिन ये लोग फ्यूचर की प्लानिंग और ना तजुर्बेकार टीम की आड़ में अपने 3 साल को एक्सटेंड कर दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा फलकी साहब, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग, कि जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं सब लोग, टीम देख रही है, पूरा कौम देख रही है, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ये परफॉर्मेंस। अशर भाई अस्सलाम वालेकुम, सब आप लोगों को भी, और कनाडा और अमेरिका में जितने लोगों को सबको अस्सलाम वालेकुम। अभी तो ये आप जो डोमेस्टिक का किया खा रहे हैं ना, ये तो पिछले डोमेस्टिक का खा रहे हैं। अभी सोचें कि सिर्फ ये 180 खिलाड़ियों तक महदूद रह गई है। एक लड़का जो क्लब क्रिकेट खेलता था, वो अपने घर से बाहर खेलता था, क्लब में गया, फिर क्लब से बाहर किसी सिटी की टीम में गया, फिर वहां से वो आगे आया। अब उसको वो ये क्रिकेट नहीं मिलेगी, तो ये सोचिए कि 2-3 साल बाद क्या टैलेंट का हाल होगा। जो रहा सा है वो भी खत्म हो जाएगा ये नए डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जो है, मुझे तो कोई मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। इस तरह ही होगा, जीत गए हार गए, जीत गए हार गए। तो जो है अभी PSL शुरू हो जाएगा तो सब कुछ भूल जाएंगे लोग, वो गाने बजाने में, वो सब जिसका जो फेवरेट प्लेयर फेवरेट टीम है वो जीतेगी, वो सब कुछ गम पुराने भूल जाएंगे। तो वैसे भी इंसान जो है ना वो बड़ी जल्दी भूल जाता है, खुशी को देख के गम भूल जाता है इंसान। तो ये यही हाल होगा जो है बाद में। बाकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर आप बिल्कुल आप उस पर आर्गू कर सकते हैं, लेकिन आपके पास और पूल बताएं कि कौन सा बॉलर, बॉलिंग पे पहले कर लेते हैं। अच्छा, एक लोगों को ये भी, एक अभी तक लोग उसी अपनी ज़हनी पुरानी कफियत से निकले कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है। पाकिस्तान पिछले 3-4 टेस्ट सीरीज बॉलिंग की वजह से ही हारा है। श्रीलंका आपको यूएई में मार के गई, आप बॉलिंग वहां को नहीं आउट कर सके। लास्ट टाइम मुझे नहीं याद कभी पाकिस्तान ने कब ऑस्ट्रेलिया को कंप्लीट एक टेस्ट मैच की इनिंग में आउट किया था, या एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में आउट किया था। साउथ अफ्रीका में लो स्कोरिंग मैच हुए, वहां पे भी आपकी बॉलिंग की वजह से, लो स्कोरिंग में भी इवन आपने उस पिच पे 2-250 खा लिए, तो आप हार गए। तो ये लॉजिक नहीं मानता कि जी पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं हुआ, तो ठीक है, फिर आप खेलने छोड़ दें। फिर मैं और मैंने ये पहले तो नहीं, मैंने तो ये लॉजिक, वो तो मैंने बात ही नहीं की, वो तो मैंने बात ही नहीं की। फिर खेलना छोड़ दो भाई। नहीं, मादी की बात नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बात ही नहीं कर रहा। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि कौन सा ऐसा लड़का जो बेंच पे बैठा था और आप उसको खिलाते तो वो तबाही फेर देता। मुझे कुछ 2-4 नाम दे दीजिए कि कौन सा ऐसा लड़का जो बैठा था, वहां क्रिकेट टेस्ट खेल नहीं रहा, आमिर रिटायर एक ले दे के राहत अली रह गया जिसको आप ले जा सकते थे। और बताइए यार, ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है, और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप बॉलिंग में डालते तो तबाही मच जाती। वार्नर को आप चलो 300 पे नहीं 100 पे ही आउट कर लेते। कोई ऐसा मुझे खिलाड़ी आप बता दें कि जो बेंच पे बैठा है या पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल रहा है और वो बड़ा तुरम खान है और वो टीम में नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ 2 नाम लूंगा। एटलीस्ट मैं नसीम और मूसा की जगह एटलीस्ट मैं जुनैद खान और एजाज सीमा को ले जाता। कम से कम इनसे तो ज्यादा बेहतर और एक्सपीरियंस बॉलर है। इन बच्चों का क्या कसूर यार, इनको आपने डीप एंड में डाल दिया, ना उनको तैरना आता है ना कुछ आता है, और एक मैच के बाद आपने निकाल दिया। अब मूसा के साथ भी ये होगा। पहली बात तो ये बताएं यार फर्की साहब, 17 मैच खेल के आप एक बच्चे को डाल कैसे रहे टीम के अंदर, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी 90s का डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी है कि वहां वकार भाई और वसीम भाई इतने मंझे पे सर्किट से निकल के आते थे कि वो वैसे ही बॉलर बन चुके होते थे। यहाँ तो डोमेस्टिक का हाल आप देख चुके हैं क्या हो रहा है यार। देखें, ये जो फर्स्ट क्लास वाली बात कर रहे हैं ना, इस पे कल एक मैं स्टैट पढ़ रहा था। दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं, ये आजकल बड़े फर्स्ट क्लास
कम मैच खेल के आते हैं, तो ये अर्गू तो अब मेरे सामने स्टैंड हो तो मैं आपको बात भी दे दूंगा। लेकिन मूसा पे मैं एग्री करता हूँ कि दोनों को इकट्ठे नहीं लेके जाना चाहिए था। एक नसीम, वो जो नसीम शाह है उसमें है टैलेंट, मूसा भी बिल्कुल रहा है, लेकिन जो जुनेद है वो बिल्कुल जुनेद खत्म हो चुका है, उसके एटीट्यूड के बड़े मसले हैं, ना उससे बॉलिंग होती है। एजाज चीमा को आप ले जा सकते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं है कोई इनमें प्लेयर, जिस तरह अब्बास की इन्होंने पिछले टेस्ट मैच में कहा अब्बास का हाल देख लिया, उसने रन थोड़े कम दिए होंगे, जितने रन इमरान ने 20 ओवर में दिए थे उसने 25 ओवर में दे दिए, लेकिन इम्पैक्ट कोई नहीं है कि कोई ऐसा सर खिलाड़ी वही आप हम कहें कि देखिए, जिसका इम्पैक्ट हो। वो वसीम भाई फारूक भाई, वसीम भाई बड़ी अच्छी बात कहते थे, जैसे हम लोग कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर। तो अब मसला है कि अगर अब्बास एक एंड से जो है वो प्रेशर डाल रहा है, दूसरे एंड से तो कुछ हो ही नहीं रहा ना सर, आराम से मजे मजे से बॉलें आ रही हैं और रन बने नहीं जा नहीं रहे हैं, सर, कोई देखिए प्रेशर नहीं आ रहा। दोनों टेस्ट मैचों में शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसको ठीक है, बिल्कुल शाहीन की, अफरीदी को लेकिन सर हाँ वो मैं कह रहा हूँ फास्ट बॉलर्स पेयर में बॉलिंग करते हैं, जब दोनों एंड से प्रेशर पड़ता है रन रुकते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर एक बॉलर बहुत अच्छी बॉल कर रहा है दूसरे एंड से रन मिल रहा है तो बैट्समैन को प्रॉब्लम नहीं, वो 6 देखें, बॉलर आप रुकेगा, माने ना माने, बाकी 6 में रन कर पाकिस्तान लेगा। जो है ना, पाकिस्तान की जो टीम है, जो पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो पिछले कुछ सालों से कप्तानी में बिल्कुल बंजर रही है। आप देख लें कि ठीक है, इल्जमाम के बाद जो वसीम और इल्जमाम का जमाना था ना, वो बड़ा वो और तरह का जमाना था। वो यारकर वो बड़े ग्रेट खिलाड़ी थे, वो उनको कप्तानी की कई तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो जहां कैच हाँ ड्रॉप ठीक हो है, गए वो बॉल डब्ल्यू करके आउट कर लेते थे, मैच जहां फंसा वहां निकाल लेते थे, नहीं तो सीधे वो भी हारे हैं, खाली स्टेडियम में नहीं, बड़ी बड़ी जगह पे हारे हैं। अब उसके बाद देखें बिल्कुल कि हार या है। तो आपके पास कप्तान सलमान बट आया है, कोई जिसके पास सोच समझ थी, वो मैच फिक्सिंग की नजर हो गया। मिसबा आया, वो आपने 5-6 साल अच्छे गुजार लिए। उसके बाद आपके पास कप्तान है कोई नहीं है जिसके पास जिसके पास कोई सोच समझ हो। आप अदर अली को भी देख लें, कप्तानी का 20-25% फर्क पड़ता है फील्ड में। 20% तो 20-25% पड़ता है, ये आप भी माने कि 20-25% जी कप्तानी का फर्क पड़ता है, खासतौर पे फील्ड में कप्तानी, फील्डिंग के टाइम कप्तानी में फर्क पड़ता है, जिसका पाकिस्तान को जो जो पाकिस्तान कुछ बेहतर कर सकता है, वो कप्तानी बिल्कुल। भी वो ऐसी आप हो रही है। आपकी अजहर अली भी इस मामले में बंजर हैं, पहले सरफराज का भी यही हाल था, अच्छा आगे भी मुझे फरूख कोई भाई, ऐसा ये बड़ी कप्तान नजर नहीं इंपॉर्टेंट आता। बात जी फलकी साहब ने की कप्तानी की। जी आप अजहर अली की बात करें तो आपको याद होगा इन्हीं अजहर अली को जब वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था तो ये बांग्लादेश से सीरीज वनडे की 3-0 हार गए थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आया सही इनको बनाया क्यों गया। आप पता नहीं फलकी साहब क्या कहें, सुनने वाले क्या कहें, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि आपने टीम में चेंजेस की, लेकिन सरफराज को एज अ कैप्टन हटा के आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जी पर भाई आप भी कुछ इनपुट दें यार अपना। जी नहीं, बात तो बड़ी सही की फलकी साहब ने भी, अशर भाई आप भी बड़ी सही बातें कर रहे हैं बातें। मगर मसला ये है कि हम बातें तो सारी कर सकते हैं, इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे अरबाब इख्तिदार हैं वो आके कह देंगे नहीं जी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सॉरी माफ कर दें, अगला मैच देखते हैं क्या होता है उसमें। अच्छा फरूक भाई, ऐसा लग रहा है कि 20-25 साल से हम लोग इंक्यूबेटर में रखे हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो होते हैं ना, इन पे तजुर्बे हुए जा रहा है। वो पता नहीं तजुर्बे, हर सीरीज से पहले एक नई टीम होती है, वो वर्ल्ड कप हो, टेस्ट टीम हो, T20, उस पे तजुर्बा होता है, तजुर्बे के बाद फेल होता है तो फिर कहा जाता है जी एक और तजुर्बा करेंगे। मतलब भाई तजुर्बा करो तो किस बात का तजुर्बा करो। मैं तो फलकी साहब समझ नहीं पा रहा कि वकार यूनुस एक लेजेंड बॉलर है, मतलब वो वकार यूनुस वो बॉलर है, हम और आप, खैर आप तो थोड़े से मुझसे बड़े हैं उम्र में, वो लग भी रहा है फेंकने में। मैं उस वक्त निक्कर पहन के घूमता था, वकार भाई विकेट लेते थे तो हम लोग पागलों की तरह चीखते चिल्लाते थे। वो वकार भाई जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेरर बिठाया हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनकी वाइफ की नेशनलिटी ऑस्ट्रेलिया में, वहां वो डोमेस्टिक में कोचिंग करते हैं, कि उनके फहम फरासत में नहीं आता यार कि ये नसीम शाह जो है और मूसा जो है वहां नहीं चल पाएंगे, यासिर शाह वहां रीड हो जाएगा। तो मेरा जहन ये नहीं मान पाता। मैं सिर्फ एज अ बेसिक वैसे स्टूडेंट वकार ऑफ क्रिकेट वैसे ये बात वैसे जानना चाह रहा हूँ। अशर भाई, वकार भाई का भी रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, और जो हमारे एक सोशल मीडिया पे हमारे एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर साहब इतनी लंबी बातें करते हैं, उनका भी 42 का एवरेज है। मैं आपको छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, 2 वाक्य सुनाता हूँ आपको, जिससे हाँ आप जी बताइए। जो है ना, ये एक अभी पिछले ऑस्ट्रेलिया के दौरे में एक कप्तान ने जो है ना, वो बॉलर को कहा कि तुमने ये अगली बार बॉलर को यार्कर करनी है। उसने कहा कि कप्तान मैं यार्कर करूंगा, और वो अपना फुल रनअप से दौड़ा और उसके बाद जो है ना, उसने वो जब यार्कर की तो अपनी तरफ से उसने यार्कर की, वो बाउंसर हो गया। यानी कि आप देखें कि यार्कर से हाफ वाली नहीं हुई, यार्कर से गुड लेंथ बॉल नहीं हुई, यार्कर से उसने करनी थी, बाउंसर हो गया। तो ये हाल देखें। अच्छा फिर एक और वाकया मुझे किसी ने सुनाया, सॉरी मैंने जो पाकिस्तान टीम के असिस्टेंट कोच है उनसे मैंने, शाहिद असम, उनसे कंफर्म किया, एक दौरे में इन्होंने वकार भाई जब कोच थे और कप्तान ने कहा कि आज ना बॉलरों को प्रैक्टिस कराते हैं यॉर्कर्स की,
उनको कहा कि ठीक है। आप एक विकेट लगा के दी, हर बॉलर ने 4 ओवर करने, 4 से 5 ओवर करने, और कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ आपने यॉर्कर मारने हैं। आपने हर बॉलर ने 6 गेंदें हो गई और उसके 5 ओवर हो गए, 30 गेंदें हर बॉलर ने करनी, 5 बॉलर थे, 120 से ज्यादा गेंदें थी। वो उन्होंने कहा सिर्फ यॉर्कर मारने हैं। वो 2 घंटे न सेशन चला और आप अंदाजा कीजिए कि कितने यॉर्कर मारे होंगे टोटल। कोई प्रेशर नहीं है, आप अंदाजा कीजिए कितने यॉर्कर मारे होंगे। फरूख भाई आप अंदाजा कीजिए कितने यॉर्कर बॉलर ने मारे होंगे। अशरफ भाई मेरे ख्याल में तो जो मैंने जो देखे हैं वो मुझे मुश्किल से तो 1 या 2 नजर आए, बड़ी मुश्किल से। नहीं, उस सेशन में जिसमें बॉलरों ने सिर्फ यॉर्कर मारने थे, हर गेंद एक बॉलर ने 30 गेंदें करनी थी और 5 बॉलर थे, 150 बॉलों पे उन्होंने, कोच ने कहा कि आपने सिर्फ यॉर्कर मारने, कितने यॉर्कर मारे होंगे? अगर मैं अंदाजा करूं 10 से भी कम होंगे। सिर्फ 3 यॉर्कर, सिर्फ यॉर्कर। तो ये देखें, ये सिर्फ बहुत 3 बड़ा यॉर्कर मारे। मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। आप हाँ, इनकी बताइए। मेंटालिटी, क्योंकि देखें कई चुनाव का, जब एक इंटरनेशनल मैच में राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा होता है और एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल रहा होता है, तो राइट हैंड ने सिंगल, आपने राइट हैंड के लिए एक लेग पे फील्डर लिया, उसने सिंगल ले लिया, लेफ्ट हैंडर आ गया। अब वो उस जो लेफ्ट हैंड के लिए वो पॉइंट बन गया, तो वो उसको वहां पे लेफ्ट हैंड उस फील्डर को वो लेग पे भेजेंगे ताकि वो उसके लिए लेग साइड का फील्डर बन जाए। लिटरली हर गेंद पे कप्तान शाउट करके या वो कीपर कहता था भाई इधर आ जाओ, सिंगल हो गया है, तुम ये लेफ्ट हैंड आ गया है, अब तुम पॉइंट से इधर आ जाओ, हर दफा कहना पड़ता है। तो ये आप देखेंगे, ये जो है ना, ये चीजें आप वकार की बात करें, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है खिलाड़ियों की तरफ से। ये बात आपकी मैंने मान ली। अच्छा, ये बिल्कुल मान ली। फल्की साहब, अब उसी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। ये मसला, अब अगर मैं इसको आसान अल्फाज में इसको क्लियर रखूं, तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जब नेशनल टीम में लड़का आता है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बुनियादी चीजें सीख के आ रहा हो। ठीक है सर, उसे डोमेस्टिक खेलियो कितना हो रहा होगा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है सर, मैं वही आ रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो हमारे पढ़े लिखे क्रिकेटर्स या जो क्रिकेट को समझते हैं, उनमें से कोई भी जाके अंडर 19 या डोमेस्टिक लेवल पे काम नहीं करना चाह रहा। इनकी हुब्बुल वतनी सिर्फ उस वक्त जाती है जब नेशनल टीम मिलती है। और भी फल्की साहब, नेशनल टीम में भागे भागे जाते हैं, अंडर 19 टीम नहीं जीते, जहां अंडर 19 टीम में इनको बच्चों से इज्जत मिलेगी। ये जाते हैं नेशनल टीम में, वहां लड़के इनको जलील करते हैं, हमने 10,000 किस्म के ऐसे वाकया सुने, और फिर वो रुस्वा होकर निकल जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ छोटे लेवल पे जाके कोई काम नहीं कर रहा है। देखें, 2 चीजें पाकिस्तान को अभी भी करनी होंगी। एक, आपने गेम अवेयरनेस की बात की कि गेम अवेयरनेस, आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे तो पीटी का एक पीरियड होता था। अब तो स्कूल ही 2-2 मल्ले में बन गए, उस वक्त छोटे स्कूल भी थे, तो पीटी का एक जो पीरियड होता था उसमें आपको सिखाते थे उस्ताद बात करना, चीजें और बाकी चीजें भी जमाने के साथ चेंज हो गई। जब तक गेम अवेयरनेस नहीं होगी ना, आप उसको, अब देखें बाबर आजम अभी भी कोहली को और जो है केन को क्यों नहीं पकड़ पा रहा कि अभी उसमें उसकी स्किल्स पूरी हैं, लेकिन उसमें गेम अवेयरनेस की कमी है कि मैंने किस बॉल पे क्या शॉट मारनी है, कहाँ मैंने किस तरह खेलना है। आप देखें पहली इनिंग में 10 रन वार्नर और उन्होंने किसी गेंद को नहीं छेड़ा, उन्होंने भी 10 ओवर में कोई 20 रन बनाए हैं। उसके बाद जब सेट हो गए, गेंद पुराना हो गया, उन्होंने फिर जो है ना फुल उन्होंने जो भी लूज बॉल मिली उन्होंने कट मारे हैं। अफजल भाई, ये बताएं मुझे एक बात जी कि चले वो ये बातें तो एक पॉइंट आया मैंने कहा निकल ना जाए कि क्या ये जरूरी है कि एक बहुत अच्छा बॉलर जो है वो बहुत अच्छा कोच भी हो सर? ऐसी और आप में मिसालें 1 दफा 2 दफा 3 दफा भी ट्राई कर सकते हैं। देखें, वकार के मामले में, वकार में स्किल तो है और आगे सिखाने की स्किल भी है, इसका मैं विटनेस हूं, लेकिन वसीम में शायद ना हो, क्योंकि जो ये यूसुफ इल्तमाम वसीम वगैरह है, ये सिर्फ बता सकते हैं कि आप में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सही करना है ये उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो खुद ग्रेट थे। वकार में थोड़ी बहुत सलाहियत है, अब उसको क्यों नहीं कर पा रहा, और दूसरा अब बहुत जल्दी जजमेंट ले रहे हैं। अभी ये पहले है हुई, अभी जो मर्जी आप कह लें, जितनी मर्जी गालियां दे लें, जब तक 1 साल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग नून लीग वाले पीटीआई को कहते हैं कि दूसरे महीने तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी हुकूमत भारेगा। जब तक आप उनको 1 साल नहीं देंगे, बैठ गए। ये फल्की साहब, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, फरूख भाई के बाल चले गए, आप तो खैर अभी तक जवान लगते हैं, अलग बात है, लेकिन यही हम देख रहे हैं। 1 साल दे दो, नई टीम है, 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, नहीं तो मेरी बात चेंज हो गई, टीमों ने वर्ल्ड कप जीत लिया, हम लोग 1 साल 2 साल नहीं कर रहे हैं। आपकी प्रेफरेंस क्या है, वर्ल्ड कप या टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान पिछले एक डेकेड में जितने मैच पाकिस्तान आउटसाइड द एशिया और आउटसाइड द होम जीता है, कोई टीम नहीं जीती। आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, अपने टीम को हल्का लीजिए। बिल्कुल मानता हूं, तभी तो अफसोस ज्यादा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया को
अगला दौरा 2021-22 में होगा, फिर 25 में होगा, फिर 29 में होगा, फिर 34 में होगा, 34 वाले दौरे में भी लिख लें, इसी तरह ही पिटते रहेंगे जब तक आप अपनी ए टीम में वहां नहीं भेजेंगे। अब मसला क्या है कि इंग्लैंड इन्होंने इंडिया जब ये आज से कुछ साल पहले इंडिया को इंग्लैंड की मजबूत टीम को इंग्लैंड वाले 2-1 से टेस्ट मैच हरा के आए। मैं तो दुबई में था, ये उन्होंने पहले अपनी टीम दुबई भेजी, वहां आईसीसी एकेडमी में इन्होंने प्रैक्टिस की, उस कंडीशन में प्रोबेटर लगा के, प्रोबेटर एक मशीन है आईसीसी की जिसमें वो हर बॉलर का एक्शन, जो बॉलर उन्हें एक्शन अपना सेल करता है उसको करते हैं, वहां उस कंडीशन में पीछे बना के करते हैं। अच्छा, उन्होंने 1 साल पहले ए टीम भेजी, वही टीम भेजी उन्होंने जो उन्होंने जानी थी। यहाँ तो हमारे 1 महीना पहले आपको सिलेक्टर का ही नहीं पता है, टीम का ही नहीं पता है, 11 का, जब तक आप अपनी वहां ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से पहले यही नहीं पता था कि सरफराज कप्तान होगा या नहीं होगा, आखिरी लम्हे तक बात चल रही थी। सर ये पिछले साल मेरी बात सुने, 2015 में भी यही था, वर्ल्ड कप से पहले पता नहीं था। अफरीदी साहब के दरमियान में नया डिमांड शुरू हो गई थी, मिसबा पे तलवार लटक रही थी। ये हर दफा ऐसे होता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब हमारे माशरे, देखिए हमारे माशरे में एज ए माशरा सोसाइटी हमारे में एक बेचैनी है, ये चीजें इस तरह ही चलती रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बताइए, क्लोजली जानते हैं मिसबा ने ये अपने टीम में बहुत सारे अपने जोन के भी लड़के रखे हैं, बुलाए जा रहे हैं, उनको पर इल्जाम। कौन से लड़के? मेरी बात सुने, देखिए आज उन्होंने शहबाज यूनाइटेड के अच्छे प्लेयर के बात सुने, आज उन्होंने फैसलाबाद रीजन के लड़के सुन ले वो लड़के अच्छे प्लेयर थे, वो लड़के अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद उन्हें एसएनजीपीएल ने पिक किया या पहले ही अच्छे प्लेयर थे? भाई कोई और टीम उनको पिक कर लेती। अच्छा, एसएनजीएल तक सही थे भाई, नेशनल टीम में वो कैसे आ गए ये बताइए? कौन से लड़के आ गए बताएं ना। सब छोड़े परफॉर्मेंस जो स्ट्रगल कर रहे हैं यार, बेसिक टेक्निक नहीं है लड़कों की। वो इफ्तिखार को इतना चढ़ा के लेके आ गए, वो इतनी बाहर की बॉल चेस कर रहा है कि रिक्शे में बैठ के जाए आदमी, फिर जाके बॉल पकड़े, इतनी बाहर की बॉल खेल रहा है और कह रहे हो 3 डायमेंशनल प्लेयर है। लेकिन वो उसमें परफॉर्म तो करके आया, वो उसमें फर्स्ट क्लास में वो टॉप परफॉर्मर है। अब यहाँ पे नहीं परफॉर्म कर रहा है, गंदा खेल रहा है, वो बिल्कुल गंदा खेल रहा है। मैं कह रहा हूँ फल्की साहब, एक होता है स्ट्रगल करना, एक होता है कि बुनियादी टेक्निक ही नहीं है। मुझे सिर्फ बताइए, आज के डिसमिसल देखे, 4 दिन पड़े हैं टेस्ट मैच में, बॉल वो उसने 5 स्लिपें लगाई हुई है, एग्जैक्टली वहीं पर जाके खेलना है जहां बॉलर आपको खिलाना चाह रहा है। मुझे सवाल यार फल्की साहब, मैं और आप तो टीवी पे बोल रहे हैं ना, इनका तो सुबह शाम काम ही क्रिकेट खेलना है, इनको तो कुछ और है ही नहीं ना। इनके भाई को आप बाहर खड़ा करके तो ये चने भी नहीं बेच सकते। तो जिसका काम ही क्रिकेट खेलना है उसको समझ में नहीं आ रहा। आप रिजवान का डिस्मिसल देखिए, आप बागी, तो कोच क्या बता रहा है बैठ के भाई अंदर? हाँ। फिर वो आपको स्टोरी सुने, कोच बताता है ये कोच हमसे ज्यादा फिक्रमंद होगा, बॉलिंग कोच हमसे ज्यादा फिक्रमंद होगा। कोच क्या करने के लिए वहां पर, क्या वो चाय में बिस्किट डिबो के खाने के लिए गया है? या चाय तो मैं खाली पी रहा हूँ, बिस्किट नहीं है मेरे पास। तो कर क्या रहा है भाई? तो कोच का यही काम होता है ना, लड़कों को बताए। मतलब अब तक फरूक भाई 5 दिन पड़े हुए यार, 4 दिन पड़े हुए, और शॉट देखिए ऐसे खेलने से एक बॉल आखिरी बॉलर को 100 रन चाहिए। वो बिल्कुल, वो मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन मैंने शॉट देखे हैं, बिल्कुल गलत, फिर आपको मेरे जज्बात का अंदाजा होगा। बिल्कुल गलत किस्म की शॉट्स हैं, सिवाय जो है ना वो उसके वो लेफ्ट हैंडर जो है शान, उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉल नहीं थी जिस पे आउट हुआ जाए। बस वो ये कि लाइन से बॉलिंग कर रहे थे, हमारे वाले लाइन से भी बॉलिंग नहीं कर सकते। अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हो, उसके बाद कोई हमारी मेमोरी बड़ी वीक है, और मेमोरी थोड़ी है, जैसे हमारे मोबाइल की मेमोरी भी 2-4 तस्वीरें खींच लें तो खत्म हो जाती है, पुरानी तस्वीरें डिलीट करनी पड़ती हैं। ये याद आपको डिलीट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। ये मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जिस तरह पाकिस्तानी लड़कों ने वो सरदार ड्राइवर को डिनर दिया था, वैसे डेविड वार्नर को पाकिस्तानी बॉलर्स को डिनर देना चाहिए कि इन्होंने इतनी मजे की बॉलें दी है कि उस बंदे ने सोच के खेला है कि मैं कहां का चौके मारूंगा। आज मैं देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर दी जाए कि वार्नर के खिलाफ का जो उसने बुरा असर किया है, वो हर किसी को रिलीफ दे रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट वाले, तो इसको भी मिल जाएगा। अच्छा भाई, ये एक कमेंट आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं सैयद आमिर रजा, उन्होंने कमेंट किया है कि ये ऑपोजिशन कि हमारे कोई जो एनालिस्ट साहब गए, एक तो वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं जानता भी नहीं हूँ, खैर वो काबिल। दूसरा एक पॉइंट के जो कोच की बात हुई, तो ये भी जिस लेवल पे पाकिस्तान टीम है या कोई भी टीम होती है, तो वहां पे कोच को यानी कि स्किल्स को लेकर ही उनकी देखें बात फिर फरूक भाई, मैं आपकी बात बताता हूँ, अब बात फिर वही हो जाएगी मिसबा की बात दरमियान में। देखें मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ, देखें हर कोच बताता है। अब ये जो लास्ट इंग्लैंड की सीरीज हुई थी दुबई में 2015 में, जो पाकिस्तान 2-0 से जीता था,
तो उसमें मिसबा ने स्पिनर को आदिल रशीद को हट के कवर पे 3-4 छक्के और चौके मारे। नॉर्मली वो कवर पे मारता नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि ये आपने नॉर्मली मारते नहीं है, आप ये क्यों मारे? उसने कहा कि इनके एनालिस्ट ने आदिल रशीद को बताया कि मिसबा सिर्फ स्ट्रेट हिट कर सकता है, मिड विकेट पे कर सकता है। मिसबा तुम्हें कभी भी ऑफ स्टंप पे हट के तुम्हें कवर पे या उधर पॉइंट पे चौका या छक्का नहीं मारेगा, तो क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, ये उनके एनालिस्ट ने बताया। अब आदिल रशीद उसी हिसाब से बॉलिंग करा था, उसको ये नहीं पता था कि मिसबा इस चीज पे 1 साल से काम कर रहा है और उसने उसे देखें, आपको अपनी गेम में चेंजेस लानी पड़ेंगी, करना पड़ेगा। यूनुस खान और मिसबा तभी सर्वाइव कर गए, वो ज़हनी तौर पे बहुत मजबूत थे। अगर एवरेज स्किल के प्लेयर थे तो उन्होंने अपने आप को एक तो नज़्म डिसिप्लिन रखा, दूसरा उन्होंने गेम को रिस्पेक्ट दी। उसके इवन मैंने आशिर भाई ने भी कई दफा किया होगा, सर्दियों में 8 बजे तारिक भाई के साथ हम सुबह मैच कवर करने पहुंचते थे, वो हमसे पहले प्रैक्टिस कर रहे होते थे डोमेस्टिक के मैचों में। तो बाकी जो लड़के हैं उनको 10 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, तो वो ये डेडिकेशन देनी पड़ेगी, आपको डेडिकेशन देनी पड़ेगी। एक और मैं डेडिकेशन की बात बताता हूँ। अभी जो है किसी प्लेयर की बहुत करीब रिलेटिव की शादी थी लाहौर में, रात को शादी 11 बजे खत्म हुई, सुबह फैसलाबाद मैच था। वो सुबह 4 बजे रात को शादी अटेंड की और सुबह 4 बजे मैच खेलने वहां चले गए। तो पुराने ये प्लेयर हैं, इनको डेडिकेशन है। ये तो है, नए खिलाड़ियों में डेडिकेशन नहीं है। हाँ, ये बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि, और दूसरी बात ये, वो हम बार बार कहते हैं कि T20 ने मिजाज चेंज करा है, लेकिन फल्की साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात रेस की कि वो बैट्समैन या बॉलर के अंदर एक भूख होती है ना कुछ करने की, वो टेम्परामेंट हम आज के लड़कों में नहीं देखते। हम अपने वो टेम्परामेंट भी नहीं देखते। मैं थोड़ी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि जब पहले कभी मिसबा को, यूनुस खान को कोई कहीं फेल होते थे किसी और इनिंग में, आपको याद होगा ये जब इंडिया में गए तो यूनुस खान पहली इनिंग में 0 पे आउट हो गए, बड़ी बात हुई कि कैसे ये वो दूसरी इनिंग में डबल सेंचुरी बना दी। तो ये मुंह से कुछ नहीं बोलते थे, ये कहते थे अवर बैट इज अवर टंग, अवर बैट इज अवर परफॉर्मेंस इज अवर टंग। इसमें तो कोई ये हाँ, आज के सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे हैं, जो उन्हें अगर कोई गलत भी क्रिटिसाइज सहाफी करता है ये उसे उलझने लग जाते हैं। फल्की साहब याद है इदरीस भाई जो फैसलाबाद के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते थे कि हमें कि इमरान खान पूरे मैच के बाद, खत्म होने के बाद, जब टीम अंदर ड्रेसिंग रूम में होती थी तो इमरान खान ग्राउंड के 8 और 9 चक्कर लगा देते। तो वही बात, डेडिकेशन की और डिसिप्लिन का कोई बात बदल नहीं है हमारे लड़कों में नहीं। इसमें बिल्कुल आप स्मिथ वाली बात के, मैं 3 किलोमीटर आज भी वो दौड़ा होगा जल्दी, उसने 50 से पहले आउट हो गया। वैसे 6 किलोमीटर भागना चाहिए। वैसे मिसबा की बात सही थी कि उन्होंने स्मिथ को तो बिल्कुल, स्मिथ तक तो बारी नहीं आई, वो वार्नर ने और उसने मार के कवाड़ा कर दिया। वो दूसरे लबेशीरी थे आपकी लबेशीरी। यार फरूक भाई ये भी गलत बात है, इतने मुश्किल नाम वाले प्लेयर लेके आते हैं, हमारे लड़के से कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसका नाम इतना मुश्किल है, नाम लेके आउट करेंगे ना। काफी देर तक मैं इनको नेपाल वाला समझता रहा, लेकिन पता चला नहीं ये तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। अच्छा बोलिए अपना बड़ा कुछ हम लोग, मैं तो आज के कनाडा में नहीं, तो बताइए इस वक्त वहाँ क्या इंडोर सीन क्या हो रहा है, और समर सीजन कब से स्टार्ट होगा? गालिबन अप्रैल वगैरह से। समर जो है वो मई में शुरू होता है, लेकिन इंडोर काफी लीग्स चल रही हैं यहाँ पे इंडोर की। और जो नया रुझान आपको पता है, जो मेरा फेवरेट है, टेप बॉल का, तो वो काफी जो है वो जोबन पे है। और कुछ ओपन लीग्स भी हो रही है, कुछ क्लोज लीग्स भी हो रही है जो मुख्तलिफ कम्युनिटी के दरमियान, और वो इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अमजद भाई, आपका बहुत बहुत आपने टाइम निकाला, और मैं यकीनन उम्मीद है कि आप हमें नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन करेंगे। और मुझे लगता है कि वो अमजद भाई को थोड़ा खुल के बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। शर्मा भाई आप बहुत इंटरेस्ट करते हैं। वो फारूक भाई पीसी साहब में एक तजवीज तय हुई, एक सजेस्ट हुई थी कि पीसीबी को चाहिए कि सारे कोचेस के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे और वो पूल करा लिया करे खिलाड़ियों के सोशल मीडिया पे कि किस खिलाड़ी को सिलेक्ट करना है। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो एयरपैड दे दिया करे। वो जो है ना, सारे, कोई कहता है उमर अकमल को क्यों सिलेक्ट कर लिया, कोई कहता है क्यों नहीं सिलेक्ट किया, कोई कहता है इसको क्यों नहीं। जिसका जो फेवरेट प्लेयर वो चाहता है वो नहीं सिलेक्ट होता, खेलता, वो कहता है बस ये टीम मैनेजमेंट का आई वांट देयर हेड, बस। उसके अलावा वो जो है ना, वो कहता है ये। अच्छा फरूक भाई, एक और बड़ा ट्रेंड है इसमें बोलूंगा कि एक असल में, अब देखिए हम लोग उस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं जो जब क्रिकेट खेलने निकलते थे तो सुबह 6 बजे जाके ग्राउंड में स्टंप गाड़ते थे, तो हमें ग्राउंड मिलता था, वरना खेलने को मिलता नहीं था। आजकल के बच्चे जो कि 2 ओवर गली की क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो ऐसा आके हम लोग के कमेंट से बदतमीजी करते हैं जैसे उनसे बड़ा आलिम फाजिल है ही नहीं। और सारी बातों का मंबा ये होता है, उसकी इतनी स्ट्राइक रेट है, उसका इतना एवरेज है, उसका इतना, उस बेस पे उसको खिला ले। मूसा को इसी बेस पे लेके आए, हालत आपने देखी। बहरहाल ये लंबी बहस है, किसी और वक्त होगी। अच्छा फरूक भाई, मैं अपने कनाडा में जो व्यूअर्स उनको बता दूं कि फल्की साहब क्रिकेट के फैन है, ये मेजबान
बड़े जबरदस्त हैं। जो भी लोग लाहौर जाते हैं तो उनके घर में एक जबरदस्त डिनर जरूर होता है, भाभी जबरदस्त कुक हैं, तो उसमें कौन कौन से क्रिकेटर्स इनके घर पे आके नहीं जो है वो लुत्फानंदोज होते हैं। तो जो भी लोग लाहौर आए, आप लोग जो है दोस्त हैं, जो ब्रॉडकास्टर आते हैं बाहर से कवर करने, जी वो जी इंडिया से और इधर उधर से सब है। फल्की साहब का घर जो है वो वन विंडो एंटरटेनमेंट स्पॉट है, बड़ा मजा। तारिक सईद साहब, शाहिद हाशमी साहब, रशीद शकूर साहब, माजिद भट्टी साहब, कौन कौन से सर गौरे नायाब इनके घर पे नहीं आते। अभी वो ये सीरीज श्रीलंका की कवर करने आए थे, तुर्जा सैन उनके प्रोड्यूसर हैं, वो भी आए हुए थे। तो जो है ना वो जो है उनके साथ, आप तो थे नहीं लाहौर, तो वो रही, वो जब भी आते हैं पाकिस्तान जो है ना, वो इंडियन दोस्त तो वो जरूर आते हैं। वो लाजिमी बात है, ट्रैवल कर रहे होते हैं, घर का खाना खाए कई दिन हो गए होते हैं, होटलों का खाना नो डाउट इतना अच्छा हो, एक जो टेस्ट होता है वो घर के खाने का, तो वो अच्छा, बस इस तरह ही है जिंदगी में जो है ना। फरवई, जो इंडियन दोस्त आते हैं ना पाकिस्तान, उनका ये कहना होता है हम पाकिस्तान में खाएं क्या, या तो दाल तड़का मिलती है या मिक्स सब्जी मिलती है, और कुछ मिलता ही नहीं उनके मतलब का। उसमें भी लोग चिकन डाल देते हैं। चलिए जो भाई, बहुत 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 शुक्रिया। मुझे पता है काफी रात हो गई है वहां पे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अमजद भाई, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें यकीनन दोबारा जरूर ज्वाइन करेंगे। अशर भाई, आप जिंदगी रही तो हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जैसे लोग जल्दी नहीं जाते दुनिया से, बेफिक्र रहें, आपकी जिंदगी रहेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह रहेगी, अल्लाह ताला के हुक्म से रहेगी। एक साहब है, उन्होंने कमेंट किया कि जी आज का जो मौजूद है वो लग रहा है मेजबान। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम तो सिर्फ परफॉर्मेंस को करते हैं, किसी मेन शख्स के लिए हम बात नहीं कर रहे, और जो भी बात कर रहे हैं वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव तरीके से लें। देखें जब भी आप जब आप मेन लाइट में आएंगे, आप पे तारीफ भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, ये पार्ट। बस ये है कि जब भी जो भी क्रिटिसिज्म करे, चाहे वो जो भी खिलाड़ी हो, किसी भी करे, चाहे वो पॉलिटिकल भी हो, तो वो तमीज के दायरे में रह के करें। तो ये हमारे रूह की सुन्नत भी है, और हमें एजुकेटेड पर्सन है, हमें यही सिखाया है माँ बाप ने। फल्की साहब, एक बात बताइए, मिसबा आपका इतना अच्छा दोस्त है, जब इस तरह के फैसले देखते हैं तो दिल से तो आपके भी कुछ निकलता होगा। नहीं, देखें मैंने आपको उस दिन भी, आप इरफान पे क्रिटिसिज्म हुआ, मैंने 1 साल पहले की ट्वीट दिखा दी कि इरफान को T20 टीम में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस वक्त तो मिसबा का कोई कोच बनने का नहीं था। इसी तरह इफ्तिखार भी डिजर्व करता है, वो है, अब परफॉर्म नहीं किया, ये एक अलग बात है। मुझे लगता है मिसबा आपकी ट्वीट से ना मुतासिर है, आपकी ट्वीट्स रोकनी पड़ेंगी। नहीं, मसला यहाँ से शुरू हो रहा है। अपना वो जो है वो है, अब हर बंदे का तो एक जैसी सोच नहीं हो सकती। जो है अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करे, चाहे जो भी आए, जो है ना वो है। आइंदा किसी महफिल में ना सरफराज को भी डिस्कस करेंगे, और वो बिल्कुल तो किन वजह से बाहर हुआ। आजकल तो सरफराज भाईजान तो लाइन पे ले लेंगे। अच्छा फरूक भाई, सैटरडे नाइट है, मौजूदीन शहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो जरा इजाजत कीजिए, ठीक है ना। कैफे प्याला पे एक बार फिर अशर भाई, अच्छा बिल्कुल, वहां से देखते हैं, एक लाइव वहां से ही मारते हैं। और कैफे प्याला में जो ना मलाई भरा भी चाय जो है वो जरूर पीजिएगा मेरी तरफ से। अमजद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर बात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। Started, man. Are you sure? Yeah, I'm sorry. Alright. Welcome all to the No Good Sports Show. My name is Saad Khan. My name is Abdullah Siddiqui, and here we're going to talk about sports. Hold on. What is this? You guys are starting without me? Come on, guys. Come on. You can't do this way. Come on. Let's go first. Let's go. Hey, guys. We're 3 boys here from Mississauga. You know, we just love sports. And we're here starting a new show on Sports Trends called the No Good Sports Show. I'm Nasir Khan. I'm Saad Khan. And I'm Abdullah Siddiqui. And we're here about to bring you all the news from our favorite sports, basketball today, because we're all basketball fanatics. So you'll see us guys often on this YouTube channel talking about basketball, hockey, soccer, and cricket, whatever's hot at the time. And in those shows, we're going to talk about the games, we're going to talk about stats, we're going to talk about our opinions about players and teams and different sporting events in that time period. So guys, this summer was probably the best summer to be a Torontonian. The Raptors finally won a championship. Just so long, so many years of trying. How was your championship summer, boys? You first. I mean, it was a great summer. We had a fantastic parade where over 2 million people showed up, and even though Kawhi Leonard decided to leave us, I think we were still happy that he helped us win the title, and we hold no grudges as of right now. We're just happy that we have a banner in our
Scotiabank Arena. Exactly, and it's a great feeling. Well, my summer, this has been one of the best summers ever. You know, as a kid growing up, I've always used to watch these games with my older brother, and it's just kind of been our thing, always watching Raptors games, and we've sucked, with all due respect, for the past years, and to finally see us win a championship, and especially sharing that moment with him was very special to me, and it's a moment we hold very close to our heart, and we're champions, baby. Yeah, champions we are. So this summer happened, won the championship. Kawhi left. What do we do now? What are you guys gonna say about this season now? What do you say about Raptors? I think we still have a good team. We have Kyle Lowry, who's still an all-star point guard. We have Pascal Siakam, who just got most improved player, and I think he's going to become an all-star. So with that and new additions as well, Matt Thomas, Ronald Hunter Jefferson, and I think our whole team is just built around players who always need to prove themselves. And this year again, I think they're going to prove everyone wrong, and we're going to go possibly second round, maybe Eastern Conference Finals. Surprise a lot of people. I think as a Raptors fan, you should be incredibly optimistic towards this season. Sure, our best shooter and our best player are gone now. Two of our best players in our starting lineup. Best players in the league. One of the best players in the league is gone. But I think there's only room for happiness when you talk about this Raptors team. Pascal Siakam, in my opinion, is a rising superstar. Maybe not this year, next year definitely he will be up there in the MVP rankings. Fred VanVleet, he's becoming an all-star point guard sooner or later. Kyle Lowry's aging, but his leadership is super strong. We have a strong core. Our bench squad is amazing. And just knowing that, I feel like going into the season, we should be happy and don't expect too much, but expect a lot at the same time. Okay, guys. But look at it this way, you know. The Raptors are not the only team in the NBA. There's 29 other teams. And just because they won it last year doesn't mean we're going to win it again this year. I know you guys are hopeful. I'm hopeful as well. But that doesn't mean that it's going to be ours again. You know, it's not a walk in the park anymore. What do you guys have to say? I agree. I think there's a lot of tough competition. We saw in the West, James Harden is now teaming up with Russell Westbrook. We got Anthony Davis, LeBron James. We got Kawhi and Paul George, obviously. I mean, that was a big game changer. Now, you look at the West and you see three teams who think they all have enough to get to the NBA Finals, but they're going to have to face each other before they get there. And then you look into the East, where you have the Bucks, the Sixers, you have the Celtics, you have the Raptors. I mean, you have Heat, who's rising. Jimmy Butler, fantastic player. It's difficult. I'm not sure where it's going, boys. If I'm being incredibly real, I feel like last year, you kind of always thought it was Golden State who was going to make it, and from the East, it was Toronto and Boston, but it's more Toronto because Toronto, they didn't have as much off-court issues as Boston. But this year, it's completely spread over the park. There's three amazing teams in the East who all have potential to make the finals. Three amazing teams in the West, as you did. And you include three, but you're missing teams like Denver, who I think, with all due respect, they deserve. Yeah. They also have just as equal chance. First last year, Nikola Jokic, amazing player. Oh, Portland finals. They got Carmelo. Who knows what? There's sky's the limit for them. But if I'm talking about people who's going to make it out of the East and West, out of the East, I have Boston Celtics. And from the West, I have the LA Lakers. And your champions in the end then, who you going to say? I have to go with my own man, LeBron James. The LA Lakers will win the 2020 NBA championship. That's my take. You, on the other hand, how about you? I think it's close in the West between the Clippers and the Lakers, but I think the Rockets deserve some respect as well. I think the Rockets are going to surprise a lot of people, and they're going to make it to the NBA Finals in my eyes. I think James Harden, who's averaging 38.3 points a game right now, he's doing absolutely amazing. And with Russell Westbrook now, he's a lot more calmer. He has trust in his point guard. And I think they will be able to beat the Clippers or the Lakers in the Western Conference Final. And from the East, I think it's wide open. Philadelphia, Bucks, Sixers, Raptors. If they get into the second round in a 7-game series, anything can happen. Injuries, suspensions, anything. And there's so many factors that they're not available now that might be happening back then. I think in the East it's difficult for everyone. So we have all these teams, but what about who we're going to say is the most valuable player this season? MVP? MVP. The MVP race. Well, I got to go with my main man, LeBron James. He's going with the king here, boys. Going with the king. Who do you go for? I'm going to go with the opposite factor. I'm going to go with James Harden. James Harden? He was so close to it last year. I think that it was just the media. Everything was against him. It was written for Giannis to win it. I think his stats last year were amazing, just like they are this year. He's averaging 38.3 points a game, which is absolutely insane. He's at over 3 40-point games already, and we're
not even at the end of November. So he's going popping off, and I think he's going to continue, and he's going to go and get MVP. So you're saying Harden, and you're saying LeBron. I say No, LeBron. but what about the reigning NBA MVP? Giannis Antetokounmpo? See, I like Giannis. He's tall, athletic. He can't shoot the ball as well as he'd like. But what about the fact that he takes 2 steps from the half-court line and he just dunk it? You know what? You're right about that, but in my opinion, what's the main objective in basketball? To win the game. And as much as on-the-court presence is very important, I think to win an MVP, your off-the-court presence matters too. You know what people call LeBron James? Le GM. You know why? Because he has the ability to change his team whenever he wants, however he wants it. Compare the Lakers team this year to the Lakers team last year. He wanted Anthony Davis. The Lakers team gave him Anthony Davis. Giannis wanted Milwaukee to improve, and you know who they got? A 36-year-old Kyle Korver. You understand my point? Yeah, I get you. Fine. So guys, please like and subscribe on YouTube. Also catch us on the following social media websites, as well as our own Instagram page called the No Good Sports Show, as well as drop your comments to see what you guys want us to talk about, and we'll do that as well. Thank you. Yeah, and we'll see you guys later. Universities, please accept me.
Hey everyone, welcome back to the No Good Sports Show. We are back for our second episode. Believe it or not, we made it. How have you guys' week been? It's been a great week, you know. We've gone really well. A lot of fun. I think the last episode was a lot of fun. We're going to have more fun today. Well, today we're going to talk about cricket and more specifically everything that's going on. So right now it's the Pakistan versus Australia series, the India-Bangladesh, and the New Zealand-England series. So let's get right into it. So first off, I want to talk to you guys about a topic that's been really big, the Mohammad Abbas being dropped. Well, I think, you know, put it this way. A year ago, this guy demolished the Australians in a much worse place for a bowler, a fast bowler especially, in UAE, best bowler. People were saying he's the number one bowler. Dale Steyn, the former number one bowler for 5-6 years. He said he's going to be number one. And now what does Pakistan do? In typical fashion, you know what? We're not going to play him, you know. We just won't play him. Why we're not going to play him? There's no other reason. We'll defend our reason, but we're not going to play him. You always expect the unexpected from Pakistan. You never know what they're going to do. Mohammad Abbas being dropped is mind-boggling. I really don't understand. He is our best bowler on this tour, and we're going to drop him before the first test. Unbelievable. I don't know what's going through the head of Misbah and Waqar Younis. As coaches, they need to be putting out a team that can go and win. And as we have seen, this team, they're not good enough without Mohammad Abbas. He is our star bowler. He's the leader of our pace attack, and with him not playing, and us playing a 16-year-old and someone who's in the 30s, it doesn't cut it. We need Abbas on the side. And you're talking about Misbah and the coaching side. Can you go more in detail into the coaching issues of Pakistan? Well, I think if you have one guy as your chief selector, your head coach, and your batting coach, you're going to have some issues, you know, man. You're talking about Misbah al-Haq, of course, right? Yes, Misbah al-Haq, I don't want to say, but if you have one guy who eradicates the previous coach, then becomes the head coach, it's massive conflict of interest. On top of that, there's too much control, where there's not as much supervision, and you've seen ever since he's become head coach, there's been no improvements. You won two games against Sri Lanka, you lost 3 T20s, you lost 2-0 in the T20 series, because you know what, one game, Pakistan, they saved their respect by the rain. The rain saved them. And then you see in the first test right now, you're getting absolutely thrashed. Absolutely thrashed. There's nothing at the moment you can say to Pakistan. Probably going to lose their innings defeat. If they don't, it won't be a pleasant weekend for them. Talking about coaches, Waqar Younis, I don't understand how he gets a role in PCB. He failed as head coach twice. We saw after the 2016 T20 World Cup, unbelievable. He could not control the side. He is bringing in players back then who were not able to perform, and now Misbah is making the exact same mistakes. Bringing the likes of Omar Akmal and Ahmed Shahzad, who have consistently proven to us, that they're not good enough. We talk about consistency all the time from our players. Babar Azam, one player, is showing he's consistent. But when we bring players that are unable to perform, why are we making the same mistakes and bringing them back again? It's mind-boggling that Waqar Younis and Misbah al-Haq are making these decisions, and those are the reasons we're losing games. Damn, coaching, man. Little stuff like this. Yeah, man. We just want our team to be good if they refuse to be good themselves. It's their own. But you know what, let's talk about the Indian Pacers. I think the fact is the Indian Pacers have been outstanding. We've always thought that India had a very good spin attack. They've been a batting side always. But in this recent series with Bangladesh, you've seen their pace attack go up another notch. You see Ishan Sharma bringing the ball both ways, where you only expect him to bring it one. Just the fact that he's done that, it just changes the complexity. You got 3 Pacers, all quality Pacers. And right now in Bangladesh, we're just seeing Bangladesh getting steamrolled. It's not by the spinners, it's by the pacemen. How is Bangladesh going to be able to cope? Yeah, we saw in the previous series as well against South Africa, the Pacers were the one that were doing the damage. I'm very impressed with Ishan Sharma. He's always been given the title of a player who plays overseas for them, but I think now he's cemented his side for a player who can play at home as well. His ability to swing the ball both in and out with the new ball is absolutely unbelievable. He is top class in my vision, and to be fair, you have to give him credit for what he's done, especially in those conditions. That's fair. Now talking about the rest of the cricket world, can we just give a moment to reflect upon the New Zealand dominance that they've shown? Well, I think, you know, we saw New Zealand versus England, 2 great teams, with a great test series. England 330 par for a first inning score. New Zealand just thrown him out of the park. That time, middle order, Watling nearly 170, still playing on. De Grandhomme with another 50, and Sander. What can you say about him? One of the best all-rounders, maybe?
really good spinner, and he's able to help with the bat as well. Yeah, that was a key 100. Oh, fantastic partnership with BJ Walling that he had. Over 200 runs. And he's just been performing fantastic well for their country. As well as BJ Walling, who doesn't get enough credit for, as a wicket-keeping batsman, he's always overlooked, but he's doing the job that they need. And I think they're putting themselves in a fantastic position to go on and win this test match. That's incredible. New Zealand, maybe Pakistan could take some notes from how well they're doing. I think they can take notes from quite a few teams around the world. So guys, today in the Super 50 Cup, we also had Canada playing. Unfortunately, not such a great result. They lost to Barbados by 7 wickets. Canada's high performance team scored 154. They're bowled out, and Barbados chased it down easily with 7 wickets remaining. Unfortunately, it wasn't a great day, but stay tuned. On the 25th, Canada plays against college campuses and colleges. Thank you everyone for tuning in. I hope you had a great time. Please check in next time. Don't forget to like, subscribe, and comment, and follow us on our social medias. And don't forget to follow our Instagram page and wait for updates on it at the No Good Sports Show. Thank you. Peace out. Yeah, and we see you guys later. Universities, please accept me.
Hey guys, welcome back to the No Good Sports Show. I'm Nasir here with Abdullah and Saad, and we're here to talk about basketball. But first, we gotta talk about what he's wearing. What I'm wearing. What you're actually wearing. I think I'm pretty fashionable today. I'm wearing the Canadian tuxedo, jeans on jeans. I think it's fashionable. But if you're calling me out on my fashion, look at his hair, dude. Yeah, he has a that's a good he has point a as well. Squilliam from SpongeBob thing going on with a bit of blonde. That's a good point as well. Let's talk about the Raptors. That's what we're here for. NBA. Change the topic, eh? Let's go back to what we're supposed to be doing. Let's get back to the Raptors. Actually, second best team in the East, 14-4. Undefeated in 6, but all the credit's gotta go to that defense, man. Every time they have any player in the post, almost doubling him. We saw that against Orlando. We saw that against the Knicks. And we saw that against Embiid, and we all saw how that night ended. Yeah. Almost every team this season that they played against, they played amazing defense. And I just want to go back to a very famous quote in basketball: "Offense wins you games, defense wins you championships." What do the Raptors want? Championships. So let's talk about how their defense is so good. Basically, it's at the end of the day, it's just team defense. Box and 1, triangle and 2. It's just very good defensive schemes, and we're using that to shut down people, all-stars, superstars. Team defense wins games, wins championships, and Raptors use that philosophy and have pursued it to perfection early on this season. Talking about stopping big players, I just had the stats out here. Joel Embiid, 0 points, 0 from 11 from the field. LeBron James, 13 points, just 5 from 15 from the field. Kawhi Leonard, 12 points, 2 from 11 from the field. Damian Lillard, 9 points, also just 2 from 11 from the field. Yeah, 2 from 12 from the we field. broke that field record of his. It was like 10 points, and I think 239 consecutive games or something. And we Raptors broke that. Embiid first time with scoreless. Come on. I watched that game. It was crazy. I mean, it was not only he was missing shots, he missed a couple of free throws as well. I mean, we did everything we could to put him off. Marc Gasol was amazing defense. Veteran experience, 36 years old, playing like a 26-year-old on the defensive end, right? Yeah. Absolutely. Absolute G there. Great play calling by Nick Nurse. We have to give him a shout out. Great coach. Talk about Nick Nurse. He just had his 100th game as coach for the regular season. I like to applaud him. He did really good. 72-28. Fantastic record for a coach who's just coming to the league, and he has a NBA title. So I mean, lots of credit goes to him. Deserves it. And considering the adversity he got, we fired Dwayne Kelsey. He was coach of the year that year, and then just to prove that Masai Ujiri made the right choice by firing him was huge for Raptors fans, and it's paid off. Congratulations, Nick. It was a tough call, but Masai made it. Yeah, Nick Nurse, I think he's shown out. Like last season was easier. It wasn't easier, but you have Kawhi, you have Danny Green. When you have Kawhi, it's always going to get easier a bit. But without them, that was just going to be a challenge this year. And he's done great. He's killing it. But talking about Nick Nurse, Nick Nurse came when Dwayne Casey got fired in the 2018 offseason. You know what else happened to Dwayne Casey? What else happened to the Raptors organization? DeMar DeRozan got traded. And I don't know if you guys have heard, but there's trade rumors that DeMar DeRozan might return back to Toronto. What are your guys' opinions on that? Look, I love DeMar DeRozan. Ever since he was drafted to the Raptors, he's been a great player. He's helped us become contenders to where we were. I don't think the championship would have been possible if it wasn't for his trade. But in all my love for DeRozan and everything, I just can't take that. We just can't trade for him now. You don't want DeRozan? Not at this point, man. He's a good player. He helped the Raptors a lot. Maybe at the end, twilight of his career, his last season or something. But he just doesn't fit into our plan because we're still trying to win. And as good as we're doing, I just don't think DeRozan will be helping us on both ends of the floor. I agree. I think our main team motto is defense, and DeMar DeRozan clearly lacks that, and he doesn't have a 3-point shot either. And he's going to be taking a place of a player, even if he goes on the bench. I just don't see where we can fit him in. I don't see a good trade really, because we're going to have to give up quite a bit for him anyway. So I don't know. I don't fancy it, to be honest. So another popular trade rumor in the NBA right now. Memphis needs to get rid of Andre Iguodala. The Raptors have shown interest in Andre Iguodala. Thoughts and opinions on that? If the trade rumors what was the trade rumor that was actually talked about Andre Iguodala? Who was included in that trade rumor? I believe it was Norman Powell, maybe a Marc Gasol sprinkled in there, and a first-round pick. Iguodala's a good player, but don't get me wrong, he's going to be a free agent next year. Mm-hmm. I don't know if he'll re-sign with the Raptors, and I think the way Norman Powell played last night, he showed his career high. Raptors were sinking against Orlando. It was for him.
and maybe solely him and the defense, the Raptors came out victorious. It was a gritty win. He's outscored Orlando in the third quarter. Yeah, 19 to 12, yeah. Himself, yeah. Crazy. But But then- he really took over. I mean, we were always looking at Norman Powell as that outcast of the team. He Yeah. wasn't really performing as much as we probably wanted him to. But last night he really, when Pascal Siakam shots weren't going in, Fred's shots Yeah. weren't going in, no Kyle Lowry, no Serge Ibaka. I mean, Norm stepped up and Yeah. he did very well. But we're going quite off topic here. Let's go back to Iguodala. Do we want him as Raptors fans? I personally say I would like Andre Iguodala. I think we're giving up too much. Another first round pick, I'm against it. As we gave up last year for Kawhi, understandable. Is Iguodala worth you giving up a first round pick? He's a good defender, don't doubt that. But will the Raptors be too crowded up front then? That's a fair point. Ibaka, Gasol, Siakam, I know you've seen Boucher, but would they be able to take up Iguodala? You know, that'll be your fifth big man. And Boucher's he's good enough to be your fourth big man on the team, you know? He's not too bad. So I think with that, I'm gonna have to say no to Iguodala. As good as he is, I think the Raptors right now are. So what about you? I think it's a tricky decision. I think it's all up to what we offer and what they accept. I'm not too keen on giving up too much, especially I've heard in later hours that Pat McCallum might be one player who might be going there. Norman Powell again. I don't know. And first round pick. I don't know if we can really do that for someone whose contract is expiring. And even if he does help us get a 1 year title, it's a 1 year thing, you know. It's difficult. I think too short term every year. Yeah. I think long term. Well, we've got to start looking for the future as well. So, Pat McCall, he's a player for the future. We have Norman Powell, player for the future. I mean, it's a tough one. So I'm not talking sure. about long term, there's a 2021 free agency class, you know? And apparently there's reports Miami are prioritizing for Giannis. Giannis Antetokounmpo. That might be a big free agency class because Paul George and Kawhi might opt out of their contracts, which most people expect them to because they might be able to make more money at that time. Mhm. As 2 years time, Paul George, Kawhi still might be in their prime in a way, so they can still be offered more money. So You talked about those two, but you're saying players who are still very good, including Gordon Hayward. You got Mike Conley Jr. You got Drew Holiday, defensive beast in my opinion. You even got Anthony Davis if he does not opt out of his program next year, which he most likely will. You have DeMar DeRozan, who we talked about before. We also have the main man, Giannis Antetokounmpo. Let's talk about him for a second. see, look, I think every team in the NBA would want Giannis. A piece of the you know? pie. Yeah. You know, there's no one. The NBA hasn't seen a presence in the paint like Shaq, the way Giannis is. You know, That's true. you can't just from the upper line. You take 2 steps and you're just able to go and dunk it off. You know, You can't stop him unless you're Kawhi Leonard. Yeah, and I think the Greek Freak. He is the Greek Freak. I still believe deep down in my heart that Masai Ujiri is the key, and he's gonna bring Giannis back to Toronto. Hopefully that happens, but Miami is a team that attracts big stars. Yeah. Jimmy Butler is already there. Does Giannis want to team up with Jimmy Butler and take over the East with Miami? We saw players like LeBron James who went there, Chris Bosh went there. I don't know, it's difficult. I mean, he really can go anywhere. It's all about in 2 years' time where every team is at. I mean, is Bucks really contending for a title in 2 years? If it doesn't work over the next 2 years, why would he want to stay? And it's so sad. I just want to bring up a topic: location. How important location is. Toronto, it gets to negative 30 in the winters. NBA stars, all stars hate that. Like, you think if Toronto was, negative, was always in the 20s this summer, every time it was Miami weather, do you think Vince Carter would have left? Do you think Chris Bosh would have left? In my opinion, no. Kawhi Leonard, he eventually left. He said that's because of family, but I think deep down it's also the weather thing, which is so unfair. Look, I think when Kawhi came, he actually loved Toronto for what it was. Mm-hmm. He had his decision. Everyone has their own decisions, and everyone has their own right for their own decisions. We have our right for our opinion, so we can speak our opinion. But at the end of the day, it's whoever decision it is, and it's final with them. So the rest of us just have to be fine with it. Yeah. But with Giannis, look, Milwaukee's not a big. It's not a big team. You know, it's become a big team because of him, but it's not a big city area. It's like not like New York or LA or Miami even. It's not one of those. But if there are also chances of him staying, what do you say about that? To be honest, I would, if I'm a Bucks fan, I would be confident that he's re-signing. They've always been loyal to Giannis, so who knows? But I think he will re-sign with the Bucks. What about the top 2 teams? You know, it seems like LeBron and
Giannis, they're just going at it for MVP, for the best team in the league. You know, there's just no stopping either of them. Both teams on 10-game streaks. What's going to go on? They're both at top of their conference, as we both said. Which team will outlast the other? Personally, I gotta give it to my man LeBron James. He will not carry the Lakers, but he will lead the Lakers over the Bucks when it matters the most. I think it's difficult to say, but I'm leaning toward Giannis Antetokounmpo. I mean, he leads the Bucks Really? so well, and even though LeBron has 80 by his side, he's just a Greek freak. He is too good. I think. Do you truly believe Giannis is better than LeBron James? I'm not saying that. I'm saying right now, who can lead their team further? I'm not even saying that the Bucks will make it out of the East, but I'm saying Giannis is the Bucks right now. The way they're playing, if they go against Los Angeles Lakers next week, I think Giannis and the Bucks. Giannis couldn't get past Marc Gasol. What makes you think But he will get past Anthony playoffs. Davis? Playoffs is what matters, bro. That was Kawhi Leonard and Marc Gasol, and we stopped him. All right, We stopped him. There's ways to stop LeBron possibly in the future as well. I disagree with you so much. With all due respect to the Raptors, I love the Raptors. LeBron James and Anthony Davis is a much better defensive presence than Kawhi Leonard and a 36-year-old Marc Gasol. If we look at it that way, Toronto Raptors did defend LeBron James and Anthony Davis this season. We did really well and we beat them. So I don't know. It's difficult. I disagree with you entirely. You know, with all this coming down, can't forget about Melo though. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony coming back to the NBA with Portland. He's been lighting it up recently, you know. Can we talk about his? He had a tough start, but can we talk about his 3 recent games? Yeah. 25 points, 8 rebounds. Okay, 19 points, 4 rebounds, and last night's game, 23 points and 11 rebounds, double. Carmelo Anthony is back, ladies. You know, he's looking like the old Melo. You know, the headband Melo. The headband, the celebration. My favorite celebration. You know, He's you that gotta way know. belongs. You gotta know. That way belongs in the NBA. He's definitely good enough to play, and we'll see what he can do with the Trailblazers. I don't know what happened with Houston last year, but I am so happy he's back. It took him a year, but he's back where he I belongs. think we've seen a bit of a revival in 2 players this season. Carmelo's surprising a few people, but some people expected. I think Dwight Howard. He's been recently. I think this year he's taken on a lesser role with the Lakers, and he's excelling really well with the Lakers. And you can't say that from being one of probably the player who was stopping LeBron James in the East when he was with the Magic, to now playing with LeBron James, but he's not playing as well. He's playing as well. We talked about that. He used to be. I think in like 2010, 2011, he was the best big man in the league. So for him to finally accept that, you know, his body isn't as strong as it used to be, and he's a bench player. To JaVale McGee of all players, to him to finally accept that I'm props to him. And now he will be rewarded by that. He's finally on a contending Lakers team who will most likely make it to the NBA Finals. So congratulations to Dwight Howard. Okay. And of course Carmelo Anthony. I'm so proud of him. Thank you guys. It's been a real pleasure today talking with you guys. Thanks for watching, guys. Don't forget to like and subscribe. Also follow us on following social media platforms, as well as our own Instagram, The No Good Sports Show. Thank you guys, and hopefully I won't have to be seen with these 2 fashionistas. I look great today. I don't know about his hair, but I think I look great today. Alright guys, please have a good time, and we'll see you soon. Bye. Action! Hello all, and welcome to the No Good Sports Show. Today, my name is Saad Khan. My name is Abdullah Siddiqui. And here, we're going to talk about sports. Hold up. What is this? You guys start without me? Come on, guys. Come on. Let's go. We gotta go do this together. Can you do that? I did not know we were actually doing it. My bad. Let's hold it again. What? Action! Sorry, man. Should we? Yeah, sure. Alright. Hello all, and welcome to the No Good... Okay. Sorry. The name? The No Good Sports Show. No Good Sports Show, take 3. Action! So guys, please follow us on YouTube, like, subscribe. Also follow us on Twitter, Instagram, YouTube, and Facebook, Sportsnet Canada. Sports Trends. There's a website. Okay. So guys, please. Ready? We've all been ready for a while. Okay. Yes, how you do.
So guys, don't forget to like and subscribe on the YouTube channel. Catch us also on Facebook on Sports Trends. Watch Also the these Saudi- following social medias, as well as we have our own Instagram called the No Good Sports Show. So don't forget, catch us on
Hey guys, welcome back to the No Good Sports Show. My name's Abdullah. My name's Sab. I'm Nasser. And we'd like to introduce our special guest, Ali. So basically today we're going to talk about basketball, and as you know, the Raptors faced the Miami Heat And they got manhandled. they unfortunately lost 121 to 110. Manhandled. So at the end, let's see positive things from the game. Positive take. Good. Kyle Lowry. I think there's back. Kyle Lowry's Serge Ibaka played good. OG can play defense. I think there's fight. There's fight shown in the game. It was a tough night, but there's fight. The shots weren't going down, but we showed fight. Norman Powell? He played Norman Powell. I think we've seen it. I think he's just driving up his trade value. I think there's a big trade coming for the Raptors mid-season, 100%. What is that trade then? You know what? As like much Andre as I Iguodala. love Kyle Lowry, I think he might be on the trade block. I think he is out of here. Because the thing is, we don't got money to give Fred, and if the future is Fred and Terrence Davis, then you got to give up Kyle Lowry now. That's a hot take. I love That's Kyle a Lowry. difficult one. I defend Kyle Lowry more than I defend my brother, but Kyle Lowry, I think he's out of Toronto by February. That's a difficult one. I don't know. I think he's gone. The game was a loss. We are obviously not happy with today's game. What are your takes from today's game? What can you take away from this, in your opinion? I cannot believe that they subbed out OG in OT because he actually did a great job in the first half. To be fair, he wasn't playing. he wasn't. So he wasn't really No, what do you mean? First half he was playing. He played great defense. No, I think he played okay, fine. As a team, we let a lot of cuts. We let them put in a lot of easy buckets, but I think we did a great job. At least 1-on-1 or 2-on-1 against. They're like Butler. two consecutive plays. OG picked up a foul on Jimmy. Yeah, they're like two picking consecutive. a foul is not playing. Yeah, but does not mean you're playing bad defense. It means how easy buckets are you giving up Jimmy Butler. Jimmy Butler did not. if you're fouling, past OG like it was no. Yeah, but did he score a lot? He put up 11 points in the first four quarters. He went 8-0 scoring. Yeah, but he outscored the entire Toronto Raptors team Triple- in the overtime. He The got- second OG got subbed out. Okay, No, OG he got didn't- triple double from assists. You know how much he passed? You remember? And he also got rebounds. Like we're a bad rebounding team. No. They're an elite three-point shooting team. He would drive past his man. Of course, he picked up He'd assists. drive No, okay, past OG, someone would come to help, and then someone else would be open. He'd pass it, get an assist, easy buckets. That's how Yeah, we but lost that's the how game. elite three-point shooting teams work. Okay, You pass okay. out to an open shooter, they shoot, So he gets an assist. You're saying the Heat are elite shooting team, but Yeah. so are the Raptors. They're number one in three-point field goal percentage. but How then much are they hitting again- how much are they hitting this season? They're probably 40-something right now. They're probably low for 40.5. Yeah, okay, But but- then so are the Heat. If this was a bad shooting night for the Raptors, but it was for the Heat as well. Every three-point shot that Heat miss, they make. So yeah, Raptors played bad, but so did the Heat. This was an outlier game for the Heat just as well as How the did they Raptors. play bad? They played pretty solid. they played- But the thing is, they miss a lot of open three-pointers. They miss a lot of open. They scored three-point- 121 points. That's not an off. Yeah, but then 10 of those last points were by Jimmy Butler alone, one guy. So they scored He's 110. their main player. You're supposed to. Kawhi was doing the same thing. Yeah, last and then what happened to guys like Duncan Robertson? He put up what? He hasn't played this season. He's for him, so He's a starter for the Miami. He's a starter on the NBA team that's second. That's tied for second. This is not no. This is not his. This might just be his first starting game because Goran Dragic is out. He does No, not. have Dragic regular- has been playing off the bench quite recently. But he's not regular on the rotation. No, Dragic Hero has been playing. Is there regular on their rotation? So then why was Duncan Robinson playing more than Hero then today? We saw Duncan Robinson playing. He put on 19 points in the first half. Okay, but if you see a guy going that way, you want him that way. So you guys are saying that this was not an off night. What was their shooting percentage tonight? No, for us it was an off night. No, for the Heat as well. No, it Heat was were not. shooting at Yes, a much it higher was. rate than us. They were shooting better than Toronto, but They played incredible. Everything went right for them. Okay. You Raptors want played stats? bad? Yeah, I want stats. I'll But bring you the stats right Heat now. That is not their average. This was a horrible shooting splits for both teams. They actually played real bad. Here's the This was a defensive game, just like Orlando's game where we shot poorly. Our defense in the end just could not come through when we couldn't stop Butler. And I think the biggest reason there was because we subbed off OG because he's a great one-on-one defender against Butler. No, he was not. Norman Powell played much better defense against Norman Powell, okay. Norman Powell had a good game. I'll give you guys that. But I'm not sure if you were paying attention to the game. He was literally guarding the left side, or either left or the right side of Jimmy Butler, and Jimmy Butler had a straight line drive. That's to how you're Ibaka. supposed to guard a defender. You don't guard in front of him. You don't face guard him. You guard a side. Yeah, but then you guard here's his the weak thing. side. He Jimmy Butler is a superstar, so he went the other way. That's what can you do about that? Of course, because that's the only open side left. But like you're supposed to guard his You're weak side. forcing him to go towards Marc Gasol, and Marc Gasol can't carry Bam Adebayo
and Jimmy Butler So simultaneously. he's Bam Adebayo goes on Jimmy Butler, gets fouled. Jimmy All right, simple. You want to talk about percentages? He shot 40%. What's their average for the season? 40%. So they had Are a you normal talking- day. No, what about 3-point? Okay. 3-pointers, they shot 40%. Now look at their shooting splits. What about 15 on 38, and Raptors hit 11 on 43. What about 24%. No, I'm talking about field goals. Normal field goals. What's their normal? 46%. No way they shot 46%. They just stats The don't stats don't lie. Women lie, men lie, stats The don't lie. stats do not lie. They shot 40. Holy shit! really well. This is Raptors got manhandled. they played really All right, well. delete that footage. The Heat played Hold really up. well. We have to accept that. Okay, guys. The Raptors, they could have played better, and we have to accept that as well. And we're not going to win every single night. We're not going to go 82-0. We're not going to hit 33s every night. There's going to be some days where our players don't hit threes. Today, Larry back from injury, he's not going to hit every single Yeah. shot, and we saw that. And then But the thing is, okay, fine. You put out the 3-point aside. By end of the fourth, or even going into overtime, the fact that Siakam did not touch the ball enough is just a sign that he has yet to mature as an elite player. Okay, Norman Powell. He was Disregard not. Norman Powell. Powell's off. If you are the leader of this team, you demand the ball. Like, I don't care if Norman Powell is Michael Jordan. on No, the that's not how it floor. works. You give it to the hot man. you demand the ball. Why do you alright? think- You're getting 35? Why did Jordan pass it off to Steve If Kerr? Kawhi Leonard was on this team right now, or if Jimmy Butler was on our team, or if Paul George was on our team, would they have given the ball to Norman Powell? Yes. No. That's why did we give it? Kawhi demands the ball. This is the biggest difference between Kawhi or any superstar against just a normal NBA player. You demand the ball. And the fact that a guy like Isaiah, or what's a guy from Orlando, the Isaiah Newton guy? I'm looking at the camera. No, not Markel Fultz. There's Jonathan Isaac or Bam Adebayo, or if these guys can stop you, you have an issue, and he is not performing well against top 4 East teams. Okay, wait. He's getting stopped by Giannis. He's getting stopped by dropped 33 Bam against Adebayo. He scored 15. 15. You're saying 15 like it's a big deal. But that's what we need from him. We need 25 averages. Why did not score 30 points every single night? Yeah, but and we lost those games, didn't we? We need him to put up at least 25 and 10. He had a negative 15 today. That was a team highest. That was tied with, I think, Marc Gasol's negative 15. Okay, if you're but Marc Gasol should not be a point of comparison at this point in his career. If you're playing 40 minutes per game and you lose a game, you're going to have a minus percentage. That's how the game works, 100%. All I'm saying is Bam Adebayo should not be able to Bam stop Adebayo you. is a great defender. You're underestimating him. Doesn't matter. He played good defense. First quarter, he was taking jumpers instead of driving in. Second quarter, He's been doing that all season. He did not touch the ball. Okay, fine. Even you know what plus minuses mean? They mean that players are doing other things except for shooting and rebounding. They're helping their team play better. In the fourth quarter and overtime, he just was staggered. He stood in the corner waiting for the game to happen. On defensive side, he wasn't moving around. He waited for plays to happen. He was not tipping the ball. His defense was all out of whack. Kelly Olynyk was not driving, and he was just rolling into the paint easily for easy buckets. That is unacceptable for a guy who's your main player and getting paid $35 a year. Kyle Lowry does this. Go on Reddit, go on NBA.com. He's getting traded. Okay, here's the deal. Every player has an off night. Can we agree on that? Yes. Okay, just let me finish first. Every player has an off night. Siakam had an off night. You can have a go at him. I give you that. Yeah, but okay, but he cannot have an off night against top 4 teams in the East. Against the Sixers, he Yeah. had a very good night. Yeah. And we won the game because he took the ball at the clutch situation. He took it, he demanded it. But that was not the only fact. I'm not saying he's a horrible player. All I'm saying, against key defenders, against top 5 teams in the East, he's not playing good, and that's a trend now. Against Celtics, he had 33 points. We lost, okay, because That's the thing. We only played 4 teams this year in the top 5. In crunch time, he is not playing good. No, okay. And he can put up 50 against. In crunch time against top 5 teams, against elite defense. Not every guy Our record speaks for itself. Not every guy. Our record is 15-5. I give you that, but it's not. Siakam is having a great season. He's number 5, maybe number 10 on MVP list. He's in the talks for another back-to-back MIP, but he's not having a good season when it comes to elite defenses. He cannot. The whole point of an elite defense is they're supposed to stop you. Yeah, and the best offensive players in the world don't have good defense. but just against because the he's an elite defense doesn't mean he cannot contribute to his team playing better. He had a negative 15 on the floor. Because he lost the game and he's playing 40 minutes per game. He had a negative 15 They lost after by rest. 2011. The last time they played a game was Sunday?
right? Or was it Saturday? Sunday. So they had a day to rest, and it was a home game. So they're in Toronto. There's no travel fatigue. He should not be. Rest is not an issue here. The issue is he's not playing well against good defense. Jimmy Butler, Bam Adebayo, their centers, their entire team's elite defense, and you're going to play this team in the second round and the third round, and he needs to develop his confidence to go against them. Okay. Elite defenders, their job is to stop. Yeah, but then if you are the main, to the mark, let him finish his mark. Elite offensive player. Right now, you can't compare Pascal Siakam. He's in his third season, by the way, third or fourth season. You can't compare him right now with the top players. Like James Harden, someone who scores. Yeah, I give you that. But if your team is depending on you to produce, then you got to step up against the elite defense. Or you got to do other things to help your team. A negative 16, that fine, 15 points, whatever. Everybody shot well. I'll put away his shooting percentages. It was probably below 40s. But he had a negative 15. He had a negative 15. That's horrible. He was missing open threes, fine. So was the team. He took a lot of jump shots that he shouldn't have. But negative 15 from the floor is unacceptable. That means you're not helping your team. You're not setting picks. You're not hustling. We lost by 11 points, so he's going to have a negative ratio. After when the game was tied, after his thing was not it was not negative 15. It only became negative 15 because Jimmy Butler went full. But the thing is, he was not a factor in the overtime. He didn't touch the ball. No one was a factor. No one was a factor. No one played well. We had 2 points. But the thing is, as a player who wants to be the leader of his team, you step up. You demand how many touches did he have in the overtime? It was negative 4. Talking about Kyle Lowry. Kyle Lowry hasn't played in 10 games. The fact it was negative 4 till he went into OT. Your point. Jimmy Butler went off. Every single player on that starting lineup. Even Norman Powell, Kyle Lowry, Marc Gasol, Fred VanVleet, they all ended up negative 15 because of that. I give you that. Okay, but if we played a bit better in OT, how many times that negative did he 15 demand the ball in overtime? The play wasn't made for him to demand the ball. It's not about play. You demand the ball. If the rest of your team is going 1 of 5 or 1 of 9, you'd be like, give me the ball in the post. We are not an ISO-oriented team like we were with Dwayne Casey. But he can go ISO against other players in New York Knicks. Nick Nurse is our coach. All the players respect him. I hope they do because he's a championship coach. I don't think it's about Nick Nurse. You are the star of this team. You want to be an all-star. You cannot just obey the coach like that. Just like Kyle Lowry demands the team to run a certain play regardless of what Nick Nurse wants. No, he doesn't. That's not he does. That's what a leader of a team does. You lead by example. You lead by whatever the coach tells you to do. That's the whole point of a coach. You can completely. The coach is not there just for decoration. Coach gives you guidance. He doesn't tell every single possession what you do and how you play. No, how do we call time? Yeah. You're saying in OT he didn't have much. He didn't have much of the ball. He was he was not contributing at all. We look at it. We have to look at it by the end of the fourth quarter. Who hit our big shots at the end of the fourth quarter? Norman Powell. Exactly. So why are we gonna take the ball away from Norman Powell in overtime? Because he's still hot. We're gonna give him the ball. The possessions he did get the ball, what happened? He completely. He would hit them. And okay, fine. Even off. Go back on defense. How many points did we get up in the fourth quarter in crunch time? Yeah, we came back, but there were some really big defensive mishaps that he gave up. And Siakam, we went 8-0 to finish off the game. 8-0 to finish off. 8-0 to finish off the game. Every time Siakam plays bad offensively, it directly shows defensively how bad he's playing. And not a lot of players on our team do that. A lot of our players, just like OG, like Kyle, if they play bad defense offensively, they pick it up defensively. And that's what's so special about our team. That's what makes it elite defense. He's the only one whose attitude carries back with him. And I remember Matt and Leo saying, possession over possession, this guy learns, but he's not learning against big teams that shut him down. Like, if you want to develop your game, you got to have the confidence, you got to demand the ball in the post, you got to force your way in there. Yeah, you're getting hacked, yeah, you're not getting calls, but you got to drive the ball in. Kawhi Leonard did not become a superstar. This is Pascal Siakam's third season or fourth season? I think it's his third season. I'm not sure. This is fourth season. Being a main option is his second season, okay? Kawhi Leonard did not become effective until the season before his injury, the 2016 season, which was his fifth season in the league. But the thing is, Kawhi Leonard was a horrible shooter. Kawhi Leonard developed that game. So was Siakam. But in order to develop that game, in order to play better against elite defenses, you need to be forceful. He's not being forceful. He's selling for jumpers that he's missing time and time again. Other nights he would hit them. Yeah, but that's the thing. He hit 44 against New Orleans Pelicans. He hit those jumpers. We're talking about New Orleans Pelicans. We're talking about New Orleans Pelicans. We're talking. Wait. Just let him finish. Let him finish. Like, might as well talk about the Knicks and Atlanta Hawks. Like, okay, those are not playoff teams. Just to finish off. We can get swept by those teams. I don't care. Just to finish off. In the last 20. Hold up. No. In the last just your final points. I'm on a Zil right now.
In the last 20 years, Spurs, the reason why they were so elite and the reason why Lakers are so elite this year is because they take care of business against bad teams. Lakers lose against teams like Raptors and Clippers, but that's okay as long as you beat the bad teams. We are beating the bad teams. Okay. So don't talk about the bad teams like, oh, we're fucking amazing. No, we gotta beat top 5 teams in the East because you're gonna play them in the second round. Yeah, you took care of Orlando. That's your first round matchup most likely. Pacers, maybe first round, right? Nets, maybe. I don't know who else is there, but you gotta take care of business against the Celtics. You gotta take care of business against Sixers. You gotta take care of business against Heat. It's not a trial and error. Once you play those teams, you gotta come out to play. When Bucks played us, they came out to play. We were playing catch up the entire game. Yeah, we caught up. Sometimes. Yeah, but the thing is, you can't go when they can't go sometimes. With those teams, you can't go sometimes. You gotta bring it every simple single as day. that. Those are, you literally gotta circle that game in your calendar and be like, I'm gonna show up in this specific game, even if I play shit against the Knicks. It's a fucking Knicks. But you play shit against Clippers and you play shit against Celtics, you gotta go home, man. You're gonna pay $35 million. Okay, that's enough for today. Just a final point. One thing you liked about today's game, one thing you improve in 30 seconds, please. You've been taking like out of the however long, I think 10 minutes you've been talking. It seems like Ali versus us, you know. Guys, we won't have him next time. The people versus Ali. We won't have him next time. Cut him off next time, you know. All right, just fair. I liked our defense. We came back, we fought, even though we shot really poorly. It was good defense effort minus Pascal Siakam. All right, final thing. One good thing today, and one thing you didn't like or you think we should improve on. Kyle Lowry's back. I love that. Kyle Lowry's back, baby. 0 for 11. Do not love that. The shot that he took, the 11 3-point shots that he took. He should have made 5 of those at least. No, not even that. Those shots would be taken by Terrence Davis Jr., who lost playing time, and Fred VanVleet, who would have won. I'm going to assume Fred VanVleet and Terrence Davis would have made those shots. But then Fred VanVleet also shot poorly. He took his normal shots. You can't hate on my boy Lowry like that. Your final thoughts. 0 for 11. One good thing we did. We could go 0 for 20. One good thing we did, and one improvement we would like. Norman Powell, I think he's been really good. He's got the hot hands in the last couple of games, so that's good to see. And improvement, just hit them shots when we need them. And Siakam play better. And I think that's 26.6 player per game. You cannot tell him to play better. Okay. Just like you told DeRozan to play better, DeRozan averaged that in his best season. You got to play better. All right, guys, that's it from us today. I hope you guys like the debate. I hope you like the studio episode. We're sponsored by nobody. And we hope you enjoyed today's episode. Please like and subscribe SportsSense Canada, as well as follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and also follow us on our own Instagram account, The No Good Sports Show. Thank you. Have a nice day.
हम आपसे मौजूद हैं CA सेंटर ब्रैम्पटन में, जहां खेला जा रहा है ताज़ा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल। दूसरा सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल हुआ था ईस्टर्न स्टार्स का, जो उन्होंने वर्ल्ड फाइनल में पहुंच चुके हैं, और दूसरा सेमीफाइनल जो है फ्रेंच 11 का मुकाबला मिल्टन लायंस के दरमियान। और यहाँ हमारी फ्रेंड्स 11 की प्लेइंग 11 है। ताहिर खान और नदीम इब्राहिम ओपनिंग करेंगे, फिर आएंगे शकील हैदर, मोहतसिन मंजूर, मोहम्मद जैद सईद, अनवर हारून वुल्फ, फ़हीम रंधावा, यूसुफ बिलाल, काशिफ अली, हसन मेहदी, उमर फ़ारूक, वसीम इकबाल और नईम इकबाल। और दूसरी टीम का है जी मिल्टन लायंस में शामिल हैं असफंदियार अली, एहसन खान, फसी आसिफ, फयाज अहमद, कमाल खान, मियां नाजिम, मोहसिन खान, मोहम्मद उमर, कासिम बट, शहजाद तारिक, उस्मान राशिद और यूसुफ बट शामिल हैं। फ्रेंड्स 11 ने टॉस किया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और यहाँ हम रेडी हैं दूसरे सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट के। पहली बॉल फुल टॉस, और नो बॉल, कीपर से मिस हुई और फील्डर से मिस हुई। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए नो बॉल के साथ फ्री हिट। एम्पायर का इशारा, बगैर किसी बॉल के, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। ये देखिए बिल्कुल मुंह पर आए उनके, वो अपने आप को बचाने की कोशिश की और एम्पायर का इशारा, नो बॉल और फ्री हिट। 5 हो गया स्कोर, बगैर किसी बॉल के, बगैर किसी नुकसान के। फ्रेंड्स 11 क्रिकेट क्लब टॉस जीत के उन्होंने पहली बॉल बैटिंग की है। अब आएगी, फ्री हिट पे है, बॉलर आ रहा है रेडी के लिए। अच्छी बॉलिंग और आउट होने का खतरा, और ये इसको और फ्री हिट 2 दफा इन्होंने कैच लेने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हमारे बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने से अच्छी एक कोशिश थी फील्डर की, लेकिन नाकाम रहे कैच लेने में और 1 रन जो है हासिल कर लिया। क्रीज पर मौजूद मुस्तसिम और नईम। मुस्तसिम अब स्ट्राइक पे है, कासिम बॉल कर रहे हैं, अच्छी बॉल थी, खेलना चाहते थे बैट्समैन मिड विकेट की तरफ। 1 रन का इजाफा हुआ। कीपर ने अच्छी फील्डिंग की, फौरन बॉल ले ली और 2 रन नहीं बनाने दिए। फ्रेंड्स 11 और CC बामुकाबला मिल्टन लायंस सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और हम आपके लाइव मनाजिर पेश कर रहे हैं CA सेंटर ब्रैम्पटन से। ताज़ा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आपके लिए। लेग स्टंप से बाहर गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल और गुड फील्डिंग फाइन लेग पे। कीपर से मिस होने के बाद बैट्समैन ने 1 रन ले लिया। इस 2 रन के साथ स्कोर हो गया 9 बगैर किसी नुकसान के। कासिम ने अभी सिर्फ 2 बॉल की है, 9 रन हो चुके। मुस्तसिम को अब आउटसाइड एज लगा पॉइंट की तरफ और सीधा छक्का निकल गया 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट था। रिप्ले में हम देखेंगे कि किस तरह से गेंद को पिकअप किया और गेंद बाउंड्री लाइन को पहुंचा दिया 6 रन के लिए। कोशिश कर रहे थे कि वो घुमाए मिड विकेट की तरफ, बट आउटसाइड पार्ट ऑफ द बैट लगा और थर्ड मैन तक छक्के तक कैरी हो गए। 3 ओवर की, पहले ओवर की 3 बॉलें हो चुकी हैं और 15 रन दे चुके हैं कासिम। देखना होगा कि आने वाली 3 बॉलों में किस तरह से वो बॉलिंग करते हैं, आया कि विकेट लेने में कामयाब होते हैं नहीं। कासिम एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की और बहुत ही उम्दा उड़ता शॉट, आउट होने का था। कासिम कहते हैं कि ये मेरा कैच है, कोई ना है, और बहुत ही अच्छी कोशिश थी, कैच मिस हुआ। 2 रन बन गए मुस्तहसन के। न सर, इस तरह के जो कैचेस होते हैं बॉलर खुद भाग के अपनी बॉल पे अगर कैच ले तो वो थोड़ा मुश्किल होता है और जाहिर सी बात है कि वो जज नहीं कर सके। हवा का रुख भी जो है अपोजिट है, उसके हवा के अगेंस्ट भागना जो है आसान नहीं। वापस आया और फुल बॉल की इनसाइड जगह मुस्तहसन की फाइन लेग की तरफ, बट कीपर ने अच्छा किया और जाके सिर्फ 1 ही रन बनाने दिया। मुश्किल कैच है मुस्तहसन का।
मगर इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप सेमीफाइनल में आप खेल रहे हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए आपको पकड़ना होता है कैच। आपको क्या लगता है जिशान भाई? जी नसर, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आपको फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग और आप बिल्कुल होशियार होना चाहिए हर घड़ी। अगर आप बॉलिंग एंड पर हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कोई मिस फील्ड ना हो, कैच ना छूटे और एक्स्ट्रास की तादाद जो कम हो। बहुत ही फ्लिक कर दिया इसको बहुत ही प्यारा रन की तरफ से, बस फ्लिक ऑफ द रिस्ट और ये बॉल गई बिल्कुल गैप में चौके के लिए। कासिम का पहला ओवर काफी महंगा, 22 रन हुए और पहले ओवर के बाद फ्रेंड्स 11 22 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट हम रिप्ले में देखेंगे। ये देखें किस तरह से उन्होंने रिस्क किया है। कनाडा में अपनी नौयत का पहला टूर्नामेंट, टेप बॉल टूर्नामेंट, जिसकी लाइव कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स ट्रेंड पर और ई आवाज़ के ताउन से। हमारे साथ टेक्निकल माविन में शामिल हैं आमिर अहमद और फर्रुख सिद्दीकी, जो आपके लिए जो है इस मैच को लेकर आए हैं। कमेंट्री में मैं हूं जिशान और मेरे साथ शामिल हैं नसर। और यह दूसरे ओवर की पहली बॉल अच्छी यॉर्कर मुस्तहसन से लगी नहीं, काफी नीचे कराई और इसलिए उनसे मिस हो गई। अब जिशान भाई, इस लेवल ऑफ क्रिकेट अब आप सेमीफाइनल में आ गए इस टूर्नामेंट के, यू गोना एक्सपेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट? जी बिल्कुल। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, ये इस तरह के बड़े बड़े मैचेस होते हैं, नॉकआउट मैचेस होते हैं। उसमें आप देखने वाले को और खेलने वाले को एंजाइटी होती है, एक कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि अच्छी जाती परफॉर्मेंस करें। और बड़ी फील्डर इसको जो रोकना चाहते थे गेंद को, बॉल तक नहीं पहुंच सके थे, वो पहुंच नहीं सके। उससे पहले ही जो है वो गिर गए थे, लड़खड़ा गए और गेंद जो है बाउंड्री लाइन के पार गई। इस चौके के साथ स्कोर हो गया 26 और कमाल के भी तक ये बॉल देखें, हुई है, 4 रन दिए। जॉर्ज में बहुत अच्छी बॉल की थी, नीचे बॉल रखी थी उन्होंने। मुस्तहसन ने नीचे निकाल दी बिल्कुल कवर की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ और चौका उन्हें ले लिया गैप में। कमाल, बहुत लंबा रनर है कमाल का। अपने अपने स्टाइल में आ रहे, टोपी मुस्तहसन पहन के, या कमाल। और ये फिर से घुमाए मुस्तहसन ने और उसी जगह पे अब छक्का मार दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर पे पिछली बॉल पे चौका था और इस बार ने उन्हें उठा के छक्का मार दिया। जी बिल्कुल खूबसूरत शॉट खेला। ये देखिए रिप्ले में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। और कमाल, अब 3 बॉल में 10 रन हो गए उनके। हवा के रुख में जाती हुई गेंद को आसानी से खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के साथ। कमाल फिर से आए चौथी बॉल के लिए। मुस्तहसन घुमाई नहीं लगी उनकी, कीपर ने अच्छी की कीपिंग की और डॉट बॉल। कमाल अपने स्टाइल में आते, लंबा रन। अब इस बॉल थोड़ा सा हट गए थे अपनी पिच पे से, बॉलर को विकेट दिखाने की कोशिश की लेकिन मिस किया मुस्तहसन ने और किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। 32 स्कोर किसी विकेट के नुकसान पर। वापस आए और ये मारा मुस्तहसन ने डीप स्कोर लेग की तरफ और उधर फील्डर आए डीप मिड विकेट से और रोक लिया। 2 रन ले लिए और तीसरे रन में तेजी से लड़ने जाते थे और पहुंच गए और इस फील्ड हुई और ये चौथा रन भाग गए। 4 रन जो बाउंड्री में नहीं हुए उन्हें भाग लिए। ये होता है एफर्ट आपको सेमीफाइनल में। ये जिस तरह के हम बात कर रहे थे कि बड़े मैचेस में एक आपके पास बहुत बड़ा प्रेशर होता है, फिर शायद बैटिंग कर रहे हैं या फील्डिंग कर रहे हैं, वही मंजर हमने देखा। ये देखें रिप्ले में दिखाते हैं, बिल्कुल हिल रहा था। अगर वो स्टेबल रहता, टेक एम और हिट करता तो मार सकता था। वापस आए कमाल, ओवर अच्छा खत्म करने के लिए और उन्हें ले लिए मुस्तहसन की विकेट। सीधी बॉल थी, उसको जज नहीं कर सके मुस्तहसन और बॉल कर दिया कमाल ने। पहली विकेट गिरी है फ्रेंड्स 11 की। 2 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर बढ़ता हुआ 36। ये देखिए शानदार बॉलिंग की कमाल की, उसको बिल्कुल समझ नहीं सके मुस्तहसन। खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, उसको घुमाना चाहते थे, बॉल को फेंकना चाहते थे बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन नाकाम रहे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 11 का पहला ओवर काफी अच्छा था, उन्हें 23 रन ले लिए थे और इस ओवर में 14 रन लिए और उनके 36 हो गए हैं और काफी ऐसे ही चलते रह गए तो वो लोग
लगता है ऐसे जैसे वो 80-90 की तरफ जा रहे हैं और सेमीफाइनल में चेस करना थोड़ा प्रेशर नहीं होगा ज़िशान भाई? जी बिल्कुल आपने सही कहा सर। जिस तरह से हमने राउंड मैचेस में अगर आपको याद है तो बहुत सी टीमों ने जो है 120 रन 140 रन भी बनाए हैं और काफ़ी बड़े बड़े स्कोर्स हुए हैं, हाई एंड स्कोरिंग हुए हैं और अभी तक क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में किसी टीम ने 100 रन नहीं बनाए हैं। अभी तक जो एवरेज स्कोर रहा है वो 80 और 90 रहा है। तो देखना होगा कि ये जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है इसमें फ्रेंड्स 11 की टीम कितना स्कोर करने में कामयाब होती है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद जो है कराने जा रहे हैं कमाल। दो ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 36। अब नईम स्ट्राइक पे और नया बॉलर एक मिल्टन लायंस के भी एक फुल टीम मीटिंग हुई थी हडल में विकेट के बाद और अब आए हैं नईम स्ट्राइक पे। लेफ्टी कोशिश करेगी लेग साइड की बाउंड्री यूज करने के लिए। नईम अच्छे शॉट मारे अभी तक। नईम ने 3 गेंदों का सामना किया और 9 रन स्कोर किए। आज देखना होगा कि वो स्कोर को किस तरह से किस तेजी से जो है वो लेके जाते हैं। एक बड़ा हदफ देना होगा मिल्टन लायंस को सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए। ईस्ट एंड स्टार्स वो वाहिद टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस मैच में जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और उसका मुकाबला होगा ईस्ट एंड स्टार से। लाइव कवरेज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए सेंटर ब्रैम्पटन से। ताज़ा फर्स्ट इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप आपके लिए इसको ताउन दिया है क्रिस्पी मीनार प्रोडक्ट्स ने। ग्रेनेज उसके साथ हमें ताउन दिए हैं चाय वाला, टपाल दानेदार, कढ़ाई पॉइंट, कढ़ाई बॉयज, ताकोला ने, साकलॉस, वन वर्ल्ड ने, फालूदा ने, फेयर शेयर ने, इसके अलावा होम कंफर्ट ने। और ये पहली बॉल नईम ने माली मिड विकेट के गैप में, बहुत अच्छा शॉट। बॉलर ने थोड़ी शॉट की, नईम बिल्कुल बॉल के ऊपर आके नीचे की तरफ मारी। 1 बाउंस 4। फसी की पहली गेंद पर, ये देखिए रिप्ले में हम आपको दिखा रहे हैं। फसी की पहली गेंद थोड़ा सा मिडल में रही और नीचे थी। अब वापस आए फसी दूसरी बॉल के लिए। अच्छी फुल कराई और लगी नहीं नईम से और एक लेग बाय इन लोग ने भाग लिया। आप देख रहे हैं लाइव मनाजिर सीए सेंटर ब्रैम्पटन से, जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेंड्स एंड ई आवाज टीवी। हम फारूक सिद्दीकी और आमिर अहमद के बहुत मशहूर है कि वो इस तरह की काबिश अहमद लाइव प्रोडक्शन लेकर आए हैं। हमारे साथ टेक्निकल माउन में शामिल हैं। रिप्लेस हम आपको दिखा रहे हैं और कनाडा में टेप बॉल टूर्नामेंट की नौयत का ये पहला मौका है जब टूर्नामेंट जो है इस लेवल पे ब्रॉडकास्ट होता है। आप टीवी पे देख सकते हैं, वेबसाइट पर, फेसबुक पर और अपने फोन्स पर आप इसको देख सकते हैं लाइव सीए सेंटर ब्रैम्पटन से। फसी ने अभी तक 2 बॉलें कराई और मैं सिर्फ 4 रन दिए हैं। एक चौका जो नईम ने बहुत अच्छा और एक लेग बाय। अब अनवर हारून आए हैं, वो अपनी पहली बॉल खेलेंगे। रेडी है वो अपनी, क्या अप्रोच होगी इनका, आपको क्या लगता है? इनकी अप्रोच होगी कि बैट्समैन को रन बनाना ना दिया जाए, लेकिन अप्रोच ठीक है, आउट होने का खतरा टीम की तरफ और एक आसान कैच लेकर अनवर हारून की इनिंग का खात्मा कर दिया। अच्छा कनेक्ट किया था बट सीधा फील्डर के हाथों में पूरा नहीं लगा और फसी ने ये विकेट ले ली। अपनी पहली गेंद खेलने आए थे ये अनवर हारून, लेकिन अच्छा हिट किया था बट सीधा फील्डर के हाथों में, इसलिए अब उनकी विकेट गिर गई है। स्कोर 41, 2 खिलाड़ी के नुकसान होने पर। 3 बॉल करा चुके हैं फसी और अभी तक 4 रन दिए हैं और 1 खिलाड़ी को आउट किया है। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फसी अपनी टीम के लिए। नईम वापस स्ट्राइक पे आ गया as the batsman crossed in while the ball was in the air और ये वापस शॉट कराई, इन्हें फिर से हिट हैमर की और ये गैप में मार दिया फिर से। इस बार नईम ने उसको पंच कर दिया है मिड विकेट गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। ब्रेक को डाल के गेम के बाद ठीक है ना। और कितने चाहिए और आए मुझे बता ना। और ये कराई उनने।
फसी काफ़ी अच्छा ओवर करा रहे हैं यहाँ। 2 बाउंड्री लगी है, विकेट भी ले लिए बट लेग बाइज है। वसीम अब स्ट्राइक पे आए अपनी पहली बॉल खेलने। फसी को अपना ओवर स्ट्रॉन्ग ख़त्म करना होगा। ये आए फसी कराने अपनी लास्ट बॉल और बॉडी के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन बट रन नहीं लिया। गुड डिसीजन दे। और 3 ओवर के एंड में यहाँ फ्रेंड्स 11 का स्कोर हो गया है 46 और 2 विकेट गिर गई है। और यहाँ हम देखते हैं कि 3 ओवर में 46 बन गए। 5 एक्स्ट्रास दिए, काफ़ी अच्छा किया है मिल्टन लायंस ने, बट मंजूर ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था उनको 24-10 बॉल पे। फ्रेंड्स 11 ने 40 रन बनाए हैं 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 3 ओवर हो चुके हैं, 3 ओवर मजीद बाकी हैं। वो देखना होगा कि फ्रेंड्स 11 कितना स्कोर देती है मिल्टन लायंस को। दूसरा सेमीफाइनल आपके लिए लाइव मनाजिर लेकर आए हैं सीए सेंटर ब्रैम्पटन से। ताज़ा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट टेप बॉल चैंपियनशिप का सेमीफाइनल फ्रेंड्स 11 बामुकाबला मिल्टन लायंस के माबेन जारी है। चौथे ओवर की पहली गेंद करेंगे वही लज्जत जैसे आपने पहली दफे खाना बनाया था। और कासिम आए बॉलिंग करने के लिए। कासिम ने पहले ओवर में 22 रन दिए थे। अब दूसरे ओवर की पहली गेंद को बीट किया बैट्समैन को, कोई रन बनाने में कामयाब नहीं हुए। नईम सामना करेंगे कासिम का। 17 रन उन्होंने बनाए हैं, 8 गेंदों का सामना किया है। और ये फुल टॉस आई बट ये आउटसाइडर लगा थर्ड मैन की तरफ। 1 रन का इजाफा। कासिम ये ओवर बड़ा अच्छा स्टार्ट किया उनका जो पहला ओवर तो उससे। जी बिल्कुल, आप रिप्ले में देख सकते हैं। बॉल थी मारने की बट उन नईम से लगी नहीं इस बॉल और थर्ड मैन पे सिंगल हो गया। और ये इधर कैच था छोड़ दिया और यूने के वेवर थ्रो फेंक दी तो उसकी वजह से ओवर थ्रो भी हो गया 1 रन। मिसफील्ड के बाद गलत थ्रो और बॉलर ना खुश दिखाई देते हुए यही होता है प्रेशर अपने साथी खिलाड़ी के लिए। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल का प्रेशर, आपको कैच छोड़ रहे, आप बॉल गलत फेंक रहे। जी बिल्कुल, वो आसान कैच था लेकिन इसको समझ नहीं किया, राइट टाइम पे पिक नहीं किया। एक अच्छा शॉट कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल ऊपर से 6 रन के लिए। फ्रेंड्स 11 को यही छक्के चाहिए, ऐसे ही रन चाहिए कि वो 80 तक तो कम 80-90 को एक टफ स्कोर बनाए। रिप्ले में हम देखते हैं कि किस तरह से शानदार तरीके से उन्होंने बॉल को पिक किया और खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ। वो शॉट उनको स्विंग कर दिया था हवा के रुख की तरह और नाकाम हुए। गेंद आए विकेट कीपर के पास, कोई किसी रन का इजाफा नहीं। अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के लिए कासिम तैयार हैं। अब तक उन्होंने 31 रन दे दिए हैं मजबूत तौर पर 55 2 खिलाड़ियों के नुकसान होने पर। और ये मारा कवर की तरफ फील्डर आया बट नहीं पहुंच सका और फिर से इन्हें अग्रेसिव रनिंग से 2 रन भाग लिए। 2 रन ले लिए, मिसफील्ड हुई फील्डर से और कासिम बिल्कुल नाखुश दिखाई देते हैं। अच्छा है बिल्कुल सिर्फ 11 रन का और इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन में 11 रन बहुत अच्छा है। जी अपने पहले ओवर में उन्होंने 22 रन दिए थे और अपने दूसरे ओवर में उन्होंने 11 रन दिए। यहाँ हम देखें तो फ्रेंड्स 11 के लिए नईम ओपनिंग कर रहे थे, अभी भी है वो 18 बनाए उन्हें 9 बॉलों पे। मुस्तहसन ने उनको अच्छा स्टार्ट दिया था 24 10 बॉलों पे। अनवर हारून मिस्ड आउट पर अभी भी वसीम इकबाल है 10 रन बनाए 5 बॉल पे। 4 ओवर के बाद फ्रेंड्स 11 का स्कोर हो गया 57 रन 2 खिलाड़ी के आउट होने पर। 5 ओवर की पहली गेंद के लिए तैयार है बॉलर। नईम रेडी है टू फेस। कासिम आए हैं। नईम क्यों फुल दी लेग स्टंप पे और ने मार दी मिड विकेट के ऊपर से छक्का। बड़ा उम्दा शॉट 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट। लीपरे में हम देखेंगे किस तरह से उन्होंने बॉल को पिक किया
और कोई में मौका नहीं फील्डर के लिए कि इस गेंद को हासिल कर सकें। अच्छा पिक किया बॉलर, फिर से फुल टॉस और नईम से मिस हो गई। मियां बॉलिंग करने आए हैं। अच्छी बॉलिंग की है मियां ने, एक बॉल पे छक्का खाने के बाद दूसरी को बीट कर दिया बैट्समैन को। आउट होने खतरा और फाइन लेग के ऊपर से एक और छक्का नईम का। सर के ऊपर से 6 रन के लिए फाइन लेग की तरफ गेंद गई थी। मियां प्रेशर में आ गए, 3 बॉलों में 2 छक्के ऑलरेडी आ चुके उन पे। नईम बिल्कुल उनको टारगेट कर रहे लगता है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और उसको बिल्कुल कीपर के पीछे से फाइन लेग की फील्ड के सर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ मजमूई तौर पर 69 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। एक और फुल डिलीवरी और नईम ने एक और ऊपर शॉट बॉक्स के दाएं जानिब से बेहतरीन शॉट, गेंद 6 रन के लिए बाहर। नईम बिल्कुल इस ओवर का मुझे लगता है वेट कर रहे थे और अब उन्हें बिल्कुल लेट लूज किया। ये देखिए बिल्कुल फुल बॉल थी, नईम बॉल के नीचे और सीधी उठा दी हमारे सर के ऊपर से और अब यहाँ आउट हो गए। वही शॉट खेलना चाहते थे नईम, लेकिन बैट ने एज लिया और कीपर ने बहुत आसानी से कैच लेकर नईम की इनिंग का खात्मा किया। एक अच्छी इनिंग, 13 बॉलों पे 36 रन की इनिंग के बाद नईम पवेलियन की जानिब लौटते हुए। 5 ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और स्कोर है 75, 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। यहाँ हम देखिए कि नईम ने 36 बनाए 13 बॉलों पे, 4 चौके और 3 छक्के। बड़ी उम्दा बैटिंग की थी नईम ने। जी बिल्कुल। नईम और मोहसिन ने ओपनिंग स्टार्ट बहुत अच्छा दिया था आज। इम्पैक्ट को किया, बहुत अच्छी गेंद थी, मिस हुई। बैट और उनके लेग के दरमियान से गेंद आई विकेट कीपर के पास और किसी रन का इजाफा नहीं। इसके साथ 5 ओवर के इख्तिताम पर 75, 3 खिलाड़ी के आउट होने पर। अब ये लास्ट ओवर काफी इंपॉर्टेंट होगा मिल्टन लायंस के लिए। कौन ये कराएगा और कितने रन, उनको जितने से जितने रन बचाने हैं। अभी एक टीम मीटिंग हो रही है, काफी लोग आ रहे डिस्कस कर रहे कौन कराएगा ये ओवर। जी उमर है बैटिंग करने के लिए और साथ देंगे वसीम का। वसीम अब स्ट्राइक लेंगे लास्ट ओवर की पहली बॉल के और आखिरी ओवर की पहली गेंद के लिए वसीम तैयार है। वापस जा रही है बाउंड्री की तरफ। एम्पायर ने गेंद का मुआयना किया और फिर गेंद जो है बॉलर के हवाले कर दी। बॉलर तैयार है, बॉल की स्लो बॉल और लगी बॉल नहीं थी, उसको खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, वसीम से लगी कामयाब नहीं हो सके। फयाज आए हैं बॉलिंग करने के लिए, वसीम सामना करेंगे उनके और ये डाउन द लेग साइड एक वाइड हो गई है। कीपर ने अच्छा किया, रोक लिया। अपनी लाइन को मिस किया फयाज ने और गेंद गई लेग स्टंप के बाहर 1 रन वाइड के शक्ल में। स्कोर बढ़ता हुआ 76, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। और एक और फ्लाइटेड डिलीवरी, वसीम बहुत जल्दी शॉट खेल रहे थे, एक लेग बाय उन्हें भाग लिया, बट फयाज भाई बहुत हिकमत अमली है कि लूज बॉल कराए, ज़्यादा तेज बॉल ना कराए, शॉर्ट पिच ना दें, स्लो बॉल करा रहे हैं ताकि बैट्समैन को खेलने में मुश्किलात का सामना। जी अब उमर आए अपनी दूसरी बॉल फेस करने, फयाज आए और ये आउट हो गए, बोल्ड कर दिया फयाज ने उमर को। सो चौथी विकेट जो है फ्रेंड्स 11 की गिर चुकी है और एक अच्छी बॉलिंग थी फयाज की। रिप्ले में हम देखते हैं, अच्छी फ्लाइटेड की और लेग स्टंप को लेके आगे निकल के खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं सके बॉल को और बॉल ने विकेट से उड़ा दी। फ्रेंड्स 11 की इनिंग की 3 बॉलें बाकी हैं, 77 है स्कोर, 4 खिलाड़ी के नुकसान पर। फयाज आए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी सी फुलटास नीचे रही, बैट्समैन इसको बिल्कुल भी समझ नहीं सके और गेंद आई विकेट कीपर के पास, किसी भी रन का इजाफा नहीं हुआ। बड़ी अच्छी ताहिर आए हैं बैटिंग करने के लिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे फयाज। ये एक और लो फुल टॉस और इनसाइड एज लगा सीधा कीपर के पास, 1 ही रन बना, बड़ी उम्दा।
दिमागी बॉलिंग कर रहे, बहुत बैट्समैन को ड्रॉ इन कर रहे कि वो मारे शॉट और बैट्समैन से लग नहीं रहा इस ओवर में। जी नसर, बिल्कुल जिस तरह से बॉलिंग की तवक्को की जा रही थी मिल्टन लायंस की तरफ से, उसी तरह उन्होंने बॉलिंग की है। बहुत अच्छी बॉलिंग की है फयाज ने। अब तक 3-4 रन दिए इस वाइड के साथ और एक बॉल बाकी है उनके ओवर की, छठे ओवर की, आखिरी ओवर की एक बॉल बाकी है और रन हो गए 79। जिस तरह हम बात कर रहे थे नसर के 80 और 90 जो है एवरेज स्कोर चल रहा है आज, तो उसी तरह से अगर देखा जाए स्क्रीन पर 79 हो गए, 79 रन हो गए और आउट कर दिया, बॉल पे आउट कर दिया फयाज ने उम्दा बॉलिंग की बदौलत दूसरे विकेट ली, सिर्फ 4 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए फयाज ने एक और विकेट लाइन की। तो मिल्टन लायंस को ये मैच जीतने के लिए, फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए 80 रन दरकार। और यहाँ हम देखेंगे फ्रेंड्स 11 की बैटिंग कार्ड, नईम इकबाल और मुस्तहसिन ने, मंजूर ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उनको 36 और 24, बट उसके बाद किसी और ने हेल्प नहीं उनको कर पाया। जी, नईम इकबाल और मुस्तहसिन मंजूर के बाद जो है किसी बैट्समैन जो है इन दोनों ने मजबूरी तौर पर 60 रन बनाए। उसके अलावा किसी भी बैट्समैन ने जो है अच्छी तरह खुलकर बैटिंग नहीं की। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे अपने नाज़रीन को। मैच चल रहा है सेकंड सेमीफाइनल फर्स्ट ताज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट टेप बॉल चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है CS सेंटर ब्रैम्पटन में। उसके लाइव मनाजिर आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स ट्रेंड पर और ई आवाज़ टीवी पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। दूसरा सेमीफाइनल हो चुका है और यहाँ हो रहा है। फ्रेंड्स 11 ने पहली इनिंग में 79 बनाए, उनका टॉप स्कोरर एक नईम इकबाल थे 36 और मुस्तहसिन मंजूर ने 24 बनाए थे, बट अहमद फयाज ने एक ओवर में 4 रन और 2 विकेटें ली थी, तो बहुत उम्दा लास्ट ओवर उन्होंने कराया था। जी, मिल्टन लायंस को ये मैच देखने के लिए 80 रन बनाने होंगे, देखना होगा कि वो टारगेट किस तरह से पूरा करते हैं और फाइनल में रसाई हासिल कर सकते हैं नहीं। इसके लिए आप हमारे जो दोबारा दूसरी इनिंग है वो शुरू हो जाती है। बॉलर जो हैं अपने रनर पर स्टार्ट हैं और बैट्समैन तैयार हैं बॉलर का सामना करने के लिए। 80 रन आपको क्या लगता है आज के जैसे हम देख रहे हैं प्रेशर है ऑलरेडी सेमीफाइनल में, बट जी बिल्कुल प्रेशर है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हवा थोड़ी सी तेज़ है आज और माहौल थोड़ा सा सर्द है, तो इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हो सकता है कि बैट्समैन को हो। अब आए पहली बॉल दूसरी इनिंग्स के सेमीफाइनल के और ये लेग स्टंप से बाहर गेंद मिस हुई कीपर से और मिस हुई फील्डर से। लेग बायस चले गए, लेग बायस का 4 रन। और पहली गेंद कराई। ऐसे रन फ्रेंड्स 11 को रोकनी होगी, ये कोई मिस फील्डिंग की ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी, ताहिर कर रहे हैं बॉलिंग के लिए, असफंदियार स्ट्राइक पे है, असफंदियार और शहजाद बैटिंग के लिए आए हैं मुल्तान लायंस। और ये फुल टॉस लगी नहीं, कवर मिड ऑफ की तरह गई और एक ही रन बन गया इधर असफंदियार का। मिल्टन लायंस और अच्छी बॉलिंग की फिर से ताहिर ने, शहजाद ने पहली बॉल घुमाई और नहीं लगी, मिड विकेट तक मार रहे थे और सीधा मिस की कीपर के हाथों में। ताहिर ने 3 बॉलों पे सिर्फ अभी तक एक ही रन दिया है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं ताहिर। यह चौथी बॉल के लिए स्लोअर कराई बट डाउन द लेग साइड, लेग स्टंप से बाहर थी तो अंपायर ने बोला वाइड बॉल। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस रन के साथ मजबूरी इसको 6 रन बगैर किसी नुकसान की, बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ताहिर रेडी हो रहे, अब इनको विकेट चाहिए। आया ताहिर चौथी बॉल के लिए और एक इनसाइड एज गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, फील्डर आया और रोक दिया, अच्छी फील्डिंग की और एक ही रन बना सिर्फ मिल्टन लायंस का। ये लाइव मनाजिर आपके लिए लेकर आए हैं CS सेंटर ब्रैम्पटन से, जहां पर खेला जा रहा है ताज़ा फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल। मिल्टन लायंस बामुकाबला फ्रेंड्स 11।
और ये लेंथ पे कराए असफंदियार ने मार दी डीप मिड विकेट पे 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत शानदार छक्का। रिप्ले में हम देखेंगे कि किस तरह से भरपूर शानदार शॉट खेला असफंदियार ने और गेंद को पहुंचा दिया 6 रन के लिए। आउटसाइड ऑफ से उठाया और मार दिया। ये आए फिर से ताहिर, फुल टॉस कराई लॉन्ग और ऑन के ऊपर से एक और छक्का असफंदियार का। हमारे कॉम्पिटिटिव और एक नो बॉल दाएं जानिब गेंद आके गिरी और नो बॉल पर 6 रन, तो 7 रन जो है हासिल किए। और एक फ्री हिट अब होगी। प्रेशर में अब आए ताहिर, फिर से फ्री हिट पे और असफंदियार ने फिर से डीप स्कोर लेग पे बहुत बड़ा छक्का मार दिया। ग्राउंड बहुत बार जाके गिरी गेंद को। सारे जितने भी तमाम तमाशाई थे, फील्डर थे, उस गेंद को देखते रहे।